Hello, 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 chat. We are live with the day number 3 and the final day of the Clutch Chess Championship. And what exciting days we have seen. Day 1 लीड कर रहे थे हमारे गुकेश, इकलौते इंडियन अमंग द 4 प्लेयर्स प्लेइंग इन दिस इवेंट. और डे 2 को कम बैक हुआ हमारे मैग्नस कार्लसन का एंड फैबियानो कारुआना. व्हाट अ डे फॉर हिम, डिफीटिंग मैग्नस ट्वाइस. हम आ चुके हैं वापस चैट. इट इज डे नंबर 3, फाइनल डे. सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आज के आज. सो चैट, क्या आप लोग तैयार हो? एक बार गुकेश ओपी स्पैम कर दो चैट के अंदर. वी वांना मोटिवेट हिम फॉर टुडेज डे. होप ही स्ट्राइक्स बिकॉज अगेन जस्ट एज द प्रीवियस डेज पहले 2 गेम होंगे मैग्नस कार्लसन के साथ. सो लेट्स गो चैट, वी आर रेडी. सब हाइप्ड अप है एंड लेट्स होप सो कि आज गुकेश एक बढ़िया उम्दा स्टार्ट करेंगे. लेट्स कीप इन माइंड डे 1 को मैग्नस से वो हारे 1.5, डे 2 को हारे 2-0. तो आज कुछ क्रेजी करना बनता है भाई. तो चैट क्या लगता है भाई? पोल मैंने डाल दिया है. 64% लोग कह रहे हैं गुकेश विंस, 29% मैग्नस विंस. सो व्हाट इज योर प्रेडिक्शन चैट? गुकेश विन, ड्रॉ या लॉस? स्पैम कर दो. एंड वेलकम चैट, स्टिंग लाइक कर देना भाई लोग जल्दी से, बिकॉज आज बहुत गर्मी फैलने वाली है बोर्ड के ऊपर. मजा आएगा भाई. गुकेश मैग्नस लास्ट डे कुछ अलग खेलेगा भाई. मैग्नस यूजुअली लास्ट डे को अपना बेस्ट चेस खेलता है. बेस्ट मतलब बेस्ट चेस. तो इट्स नॉट गोना बी इजी, लेकिन उनको थोड़ी मोटिवेशन इस बात से मिलनी चाहिए कि मैग्नस लॉस्ट 2 games टू कारुआना. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इफ यू एंड अप पुटिंग प्रेशर ऑन मैग्नस, ही माइट क्रम्बल. मे बी he's not in his peak form. That is a big statement I feel. So let's see chat क्या होगा. We are all ready. साल भाई क्या हाल चाल? बढ़िया गुरमन भाई, आप बताओ कैसे हो? सॉरी मैग्नस आई बीट यू कह रहे हैं. आई होप गुकेश को यही कहने को मिले गेम के बाद, बट फिलहाल के लिए यू डोंट नो. देखते क्या होता है चैट. एंड हम लोग रेडी हैं, प्रोड्यूसर साहब रेडी हैं, प्लेयर्स क्या बोर्ड पे आ चुके हैं सर भाई? सर भाई, okay, okay. They are here भाई. भाई they are almost at the board. स्लो मोशन में वो क्रॉकरोज वाला डांस करते करते भाई ऐसे आ रहे हैं भाई. मतलब बोलते हैं ऐसे ट ट ट ट ट ऐसे वो चल रहा है उनका भाई. आ रहे बोर्ड पे आ रहे. सो वी आर रेडी चैट. और क्या कह रही है चैट? क्या करिए भाई? हम पढ़ते हैं. टेबल स्लैब इनकमिंग भाई. टेबल समाज ने पूरा कुशनिंग कर ली है. कोई डरने की बात नहीं है. टेबलो बस रेडी रहो भाई. भैया नाइस पिक्स. आई डोंट नो एक्चुअली. आई थिंक कल आने थे, बट आई आस्क्ड हिम टू पुश इट. बेल तो बजी है बाहर, अभी जस्ट बजी है आई थिंक 15 मिनट पहले. तो शायद आ गए होंगे, वरना कल सुबह आने एक्चुअली. तो कल सुबह आ जाएंगे. एंड कल कल परसों में फिर गोवा भी निकलना है भाई. विल बी क्रेजी. साहिब भाई जोक मारूं खुद पे? अरे मारो भाई. मैं तो भाई खुद पे ही जोक मारता हूँ. किस पे मारा है मैंने? मतलब साज भाई मार सकते हैं, इफ इज नॉट वाचिंग, बट अपने पे मारेंगे मोस्टली. आई थिंक हिकारू गेट्स टुडेज लीड. यार हिकारू का मुश्किल है. I think Hikaru is on 7 points, Gukesh on 7 points. We have to be objective also कि अभी के लिए Carlsen has the best chance to win. लेकिन let's have a look at how many points are at stake. अब तक हर दिन 6 राउंड हुए, तो आज भी 6 राउंड है. एक विन के आज डे नंबर 3 पे 3 पॉइंट मिलेंगे. सो इसका मतलब 6 राउंड में 18 पॉइंट मार सकते हो आप. 3 into 6 18. मेरा मैथ खराब है, इतना भी खराब नहीं है. 18 पॉइंट मिल सकते हैं मेरे भाई. और इसका मतलब इफ यू विन, लेट्स से उकेश विंस 2 games, he could be sitting at 13. So chat,
एनीथिंग इज पॉसिबल इवन राइट नाउ. सो डू नॉट गो एनीवेयर एंड स्ट्रीम लाइक करते चलो भाई लोग. 1000 वॉचिंग होनी चाहिए जल्दी से. गेम चालू होने से पहले लाइक कर दो स्ट्रीम भाई लोग. लेट्स गो. फिर कुकी के क्लच कम बैक. लेट्स होप सो भाई. उसी पे हम लोग टिके हुए हैं, उसी उम्मीद में दुनिया कायम है कि गुकेश आज कुछ ऐसा कम बैक करेंगे, दिल दहला देने वाला कम बैक कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी भाई. ट्विटर पे वाला ट्रेंड करने चाहिए आज गुकेश भाई. ऐसा कुछ हो कि वर्ल्ड कप से पहले जो मोमेंटम है ना वो उनको मिल जाए भाई. बहुत जरूरी है. मैग्नस वोंट होल्ड बैक आइदर. भाई मैग्नस कब होल्ड बैक किया है? आज तक कभी किया ही नहीं. तो हम तो बेस्ट खेलेंगे अपना. आज भी करें बिल्कुल. 1000 लाइक्स पे तो लाइक करते चलो भाई. एंड आपको मिलता रहेगा मेंबरशिप. 1000 लाइक एवरी 1000 लाइक्स 1 डायमंड मेंबरशिप गिव अवे. इट बी डे ऑन परफॉर्मेंस ही विल हैव गुड टाइटल. यू नो व्हाट, आई गेट कि हमें टूर्नामेंट जीतना है, बट कौन कौन आप में से है. ओके चैट क्वेश्चन टू, ठीक है. ड्रॉइंग अगेंस्ट मैग्नस एंड फर्स्ट प्लेस, और विनिंग अगेंस्ट मैग्नस एंड सेकेंड प्लेस. ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, कौन सा आप चूज करोगे? कम ऑन चैट, लेट्स गो भाई. लेट्स गो. लेट्स गो भाई. दिस इज नॉट इजी भाई. दिस इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड. द फैक्ट कि मैक्सिमम बी लिख रहे हैं लोग टेल्स यू व्हाट अ विन अगेंस्ट मैग्नस मींस. इसलिए पहले ये दो गेम बहुत इंपॉर्टेंट, एंड पहला गेम सुपर इंपॉर्टेंट बिकॉज गुकेश हैज द व्हाइट पीसेस. सो क्या पता कुछ एक तहलका, कुछ क्रेजी वाइब आ जाए गेम नंबर 1 में भाई लोग. लेट्स होप सो. ऑप्शन 1 इज काइंड ऑफ नॉट पॉसिबल. भाई एनीथिंग इज पॉसिबल. यू कुड ड्रॉ 2 गेम्स अगेंस्ट मैग्नस देन विन द नेक्स्ट 4 गेम्स. इवन 3 गेम्स आउट ऑफ 4 माइट डू इट. लेट्स नॉट फॉरगेट कि आज 3 पॉइंट पर विन मिलने हैं. इट इज डे नंबर 3. एवरी विन गेट्स यू 3 पॉइंट्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. And Caruana form में तो थे, I mean, but for him to repeat what he did yesterday would be very difficult. So I think it is totally possible that if you defeat Magnus in one game, you could still finish in first place. Sal bhai, do you agree Gukesh has improved a lot in rapid format career? Shivam, I think absolutely yes. वो तो हमने पहले में भी देखा ग्रैंड चेस टूर में जहां पे जो जागरे में हुआ था. गुकेश का रैपिड बहुत इंप्रूव हो चुका है. ब्लिट्स में वी हैव नॉट सीन दैट सो फार, बट टू बी ऑनेस्ट ये फॉर्मेट भी इज मोर ब्लिट्स देन रैपिड, राइट? मतलब वो रैपिड था 15+10, 25+10. ये वाला 10+5 है. सो इट्स इन द मिडल. एंड द फैक्ट मुकेश देवन को बहुत बढ़िया यहां खेले मींस कि उनका ब्लिट्स भी इंप्रूव तो हुआ है फॉर श्योर. कितना हुआ है वो वर्ल्ड ब्लिट्स में देखने को मिलेगा. जो इस द मुकेश खेलेंगे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स. मच्छर गैमेट खेलना पड़ेगा. अरे मच्छर गैमेट कार्लसन खेल दे भाई. कोई मच्छर उसके कान में घुस जाए और बोले मैग्नस भाई जूम नहीं निकलूंगा कान से जूम जब तक मच्छर गैम्बिट नहीं खेलते भाई. जूम ऐसा कुछ कर दे, मजा आ जाएगा. हाँ, बाय द वे चैट, बिग न्यूज. कैन वी पिंग दैट लिंक समय भाई? Tickets for the first 2 rounds of the World Cup in Goa are out. So you can get those tickets if you want to. If you want to be at the World Cup, be in action at the venue जहां पे दुनिया के सारे top players आएंगे. Apart from Magnus, you can be there and witness it in real time. So tickets are live. अभी link हमारे producers आप share करेंगे यहाँ पे, and you can go and get the tickets for the first 2 rounds. आगे के rounds की भी आएंगी एज वी मूव अलोंग. अभी के लिए फर्स्ट 2 राउंड्स का उन्होंने ओपन किया है. मैच चालू होगा 10:30 पे. 2 मिनट आगे चुके. एक बार होता है सेरेमोनियल मूव, सो 1-2 मिनट लगते हैं. द मैच कुड स्टार्ट एनी सेकेंड नाउ. Want to come so bad but work है यार. या होता है, but try to find some Sunday, one day in the middle. कुछ भी possible है मेरे दोस्त. And you know what, there are benefits of coming at the start and at the end. End में benefit ये you get to see who wins, बट स्टार में बेनिफिट ये कि सारे प्लेयर होंगे. एंड में दिस अ नॉकआउट फॉर्मेट, सो वी कम एट द एंड, यू माइट मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हु माइट हैव गॉन होम. ओके गोवा है तो इंडियन प्लेयर शायद मिल ही जाएंगे, बट यू नेवर नो, दे माइट हैव गॉन होम. एब्सोल्यूट सिनेमा हो जाएगा. बिल्कुल भाई, सिनेमा ही चाहिए भाई हम लोगों को. हमने करंट. Oh, by the way, players are at the board. The game's about to begin. Chat, first move. E4, D4, C4, G4. क्या लग रहा है? Come on, chat, let's go. And Magnus थोड़ा लेट भी है. वाह. राठी की वीडियो मैंने नहीं देखी भाई, थोड़ा बिजी हूं मैं आजकल. E4, नाइट F3, F4 हो गया तो क्रेजी होगा, बट नो. D3 फायर आर्म के सेशंस एज यूजुअल एब्सोल्युटली पॉइंटलेस. A3, E4 कैरो कैन वाइट से नहीं खेल सकते भाई. B2, वाओ वाओ ब्यूटी.
I think he's gonna play. I think he's gonna play e4. I'm gonna bet on e4. Let's see Gukesh D हमारे वर्ल्ड चैंपियन खेलते हैं. Let's go. कैसे हो बढ़िया. And e4 on the board. The games have begun. Gukesh D plays the pawn out to e4. Let's see कि नहीं मैग्नस कार्लसन सोचते हुए यहाँ पे बोर्ड पे आए नहीं है अभी. उनका टाइम जीरो नहीं है भाई. जैसे चलेंगे टाइम बढ़ जाएगा. सो भाई कहाँ आ गए क्या? ओके कार्लसन आ गया है. अभी पीस एडजस्ट कर रहा है अभी कार्लसन. कार्लसन लेट. हमारे शॉर्ट फॉर्म एडिटर काम करना चालू कर दिए हैं. मैग्नस लेट अगेन एंड e4 e5 ऑन द बोर्ड. नाइट f3 देखते हैं. कल d6 खेला था मैग्नस ने. रिमेंबर याद है बिशप c4 d6 ओपनिंग कुछ हुई थी. एंड वी हैव अ स्पेनिश ऑन द बोर्ड. नाइट f6 इज द नॉर्मल मूव. यहाँ पे देखते हैं क्या खेलेंगे मैग्नस. टाइम पे गुकेश थोड़ा तेज खेलते हुए. बट हमने देखा था स्टार्टिंग 5-7 चाले गुकेश बहुत तेज खेलते हैं. बट लेटर ऑन ही स्ट्रगल्स ऑन द क्लॉक. नाइट f6 प्लेड. मे बी ही विल कैसल. विल वी सी नाइट टेक्स e4 यहाँ पे? Will we see यहाँ पे something else? Bishop e7, safe choice, solid choice. Rook e1, let's defend the pawn, Gukesh. Okay, d3 also does the job very well. b5, bishop b3, and maybe d6 यहाँ पे. Okay, castle से शुरुआत करते हैं. Okay, will he play a4? Challenge black's queen side. बहुत logical चाल. अभी तक so good so far because time पे कोई disadvantage नहीं है. 4,000 लोग देख रहे हैं. डू लाइक द स्ट्रीम. लेट्स गेट टू 1,000 लाइक्स बिकॉज आपको पता है कि डायमंड मेंबरशिप इज ऑन द कार्ड्स आपके लिए. एंड ऑफ कोर्स गोवा की टिकट्स पिन लिंक में आपको मिल जाएंगी. मीनवाइल रुकी वन प्लेड आई थिंक काफी लॉजिकल चाल. कल को व्हाइट का प्लान क्या है? इट्स c3 d4 आइडियली एंड द रुक इज परफेक्टली प्लेस्ड ऑन दैट हाफ ओपन फाइल. Rai Lopez is one of the most ambitious openings with 1e4 at the top level because strategic है. हल्की फुल्की चीजें ना, मतलब for example बोलते ना the butterfly effect, like you might like move something 1 inch and that might change the entire contours of the universe. It's a bit like that. It looks all similar, but halki si mistake and suddenly things can go south. Meanwhile, bishop b7 यहाँ पे defending the rook, connecting those pieces. Next, I think rook e8 भी आएगा, queen d7 भी आएगा. Black का plan हो सकता है knight a5 to attack that bishop. The bishop of course will drop back to c2. काफी strategic opening यहाँ पे. Tactics अभी देखने को नहीं मिल रहे, but long term जरूर देखने को मिलेंगे. Yesterday lost games against Magnus. Draw also matters. Of course, draw is better than losing, but winning is better than drawing. And जैसा हमने कहा मैग्नस को हराने का अलग ही मजा है भाई. अलग ही मजा है मेरे दोस्त. भाई मैग्नस कार्लसन है भाई. Gukesh playing fast today. Yeah, he is. He is so far. h6 by the way, preventing knight g5. ताकि जब भी Magnus rook e8 खेले, there is no knight g5 possible. So Magnus being a bit, shy today. Not shy exactly. He's being a bit cautious in the first game of the day. And up till now, I think Gukesh is tiny bit better because, Kasparov ji, जो one of the greatest player of all time मान जाते हैं, उन्होंने कहा था तुम मुझे नाइट f5 दो मैं तुम्हें चेकमेट दूंगा. लाइक बहुत फेमस कोट है, सुना होगा आपने. सो नाइट कमिंग टू f5 and it looks like Gukesh is slightly better maybe. a4 also very logical by the way, would be a logical move. Nice move Naveen bhai. I think although depends, you can wait for it, like it's not going anywhere, but a4 kabhi na kabhi to aayega hi aayega. Magnus name has his own aura. How is Reti opening? Reti is pretty awesome. Gukesh की favorite opening है बचपन से, so definitely a good choice. Magnus score is wrong. Like chat, left वाले score पे मत जाओ. That's Chesscom score because it counts one win as 1 point. Go to the right score जो मेरे नीचे है. That is the correct score because it's based upon the actual standings. By the way, bishop f8 काफी logical चाल because knight f5 आ रहा है. Black can now play g6 to prevent that. So bishop f8 also puts pressure on the e4 pawn. यहाँ पे bishop c2 खेलते हैं Gukesh, knight f8 के बाद defend करते हुए pawn को, and now knight comes to c4 and कौन कह रहा था a4? This might be a right moment to throw that in. कितना लॉजिकल है चेस, राइट? नाइट e3 आया तो बिशप f8 प्रिपेयरिंग g6. d4 आया तो नाइट a5 प्रीएम्प्टिंग d5 अटैकिंग द बिशप. बिशप अटैक हुआ, बिशप c2. यहां पे आया स्क्वायर मिल गया, नाइट c4. समटाइम्स और नाइट आया धक्का मारा, नाइट पीछे गया. लाइक चेस इज सो इजी समटाइम्स एंड स्टिल वी आर नॉट एबल टू प्ले वेरी वेल. या बाय द बीटेक से a5 ओनली मूव फॉर मैग्नस. अगर यहां गुकेश a5 खेलेंगे, नाइट के पास कोई डंका स्क्वायर ही नहीं है. मैग्नस हैज टू फाइंड a5.
He will, of course. Yeah, I mean, it's Magnus we're talking about. But chat, one good news. Look at the clock so far. That's crazy. Look at the clock so far. Though, ooh, Magnus finds a5. Holds on to that pawn for now. चेस तो लॉजिकल सारे बिल्कुल भाई लॉजिकल है, लेकिन ऐसे लोग एमबीए के लिए कई बार आप लोगों ने जो तैयारी करी है आपने लॉजिकल पजल सॉल्व किए होंगे भाई, चेस भी खेल सकते हैं उसके लिए लॉजिकल रीजनिंग। आधे बिशप डी3 खेलते हैं, सो ही इज प्रीएम्प्टिंग बिशप ए6 समटाइम्स, एंड आल्सो क्वीन सी2 स्क्वायर मुझे मिल रहा है इफ आई नीड इट। आल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट ये बिशप अभी डेवलप नहीं हुआ है, कहां जाएगा ये बिशप इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर द वर्ल्ड चैंपियन। डू आई पुट इट ऑन ए3? Do I put it on b2 defending my center? Do I want to play to e3 instead? Do I just want to wait? So बहुत सारे options हैं यहाँ पे। How to calculate well in chess? How to find tactics? I think tactics is pattern recognition basically. जितनी बार आप similar pattern देखोगे, solve करोगे, उतनी बार आप उसको game में spot कर पाओगे। So just solve puzzle rush is the simplest solution. In terms of calculation, one secret tip is play blindfold games. आई नो गलतियां करोगे, बट जस्ट प्ले इट। कोई अपने दोस्त को कॉल करो फोन पे, ए भाई क्या हाल चाल, E4, अरे बढ़िया मजा, E5, अरे भाई घर पे कैसे है, नाइट F3, अरे भाई सब दुखी है, नाइट C6, लाइक समथिंग लाइक दैट। But क्वीन C8 played again, preparing bishop A6. That's the plan. कि मारोगे तो मैं क्वीन से मारूंगा। Magnus Carlsen doesn't want a good move, he wants the best one. And now Gukesh के point of view से, I think he needs to play on the king side, either on the B file, that's also D5 खेला है, apparently not a good move. It is logical because आपका C4, Bishop E3, C5 ऐसे प्लान हो सकता है, Bishop B5 भी आ रहा है, बहुत डेडली चाल because रुक को अटैक है, लेकिन Black can instantly play C6 I think, and the position is already equal. So maybe it's an ambitious move, but maybe Magnus can solve all his problems instantly. So will he find C6? I'm not so sure he will actually. This is not so simple. भाई मैग्नस है भाई, सिंपल चीज तो खेलता ही नहीं है। फाउंड द बेस्ट मूव अगेन, एंड एक्यूरेसी देखो भाई 98, गुकेश की 98.2, सो 0.2 का डिफरेंस है, एंड मैग्नस हैज ऑलरेडी इक्वलाइज्ड। एंड नाउ इफ यू प्ले C4 फॉर एग्जांपल, सडनली बिशप A6, एंड बहुत सारे पिन है यहाँ पे यार, and usually yeah, this is not looking as great as it should have been. And if you rook b1 for example, suddenly ye pawn hanging hai, yeah, Gukesh has to be a bit careful now. maybe rook b1, like before bishop a6 happens, उससे पहले ही rook b1 खेलते हैं, एटलीस्ट सवाल पूछते हैं मैग्नस से, भाई आपका घोड़ा कहां जा रहा है, कहां जाने का प्लान है भाई बता दो अभी। एंड या तो रानी डिफेंड करेगी घोड़े को, या तो रानी इसको मूव करना पड़ेगा। सो रूक b1 माइट बी अ नाइस मूव, फोर्सिंग योर ओपोनेंट टू कमिट। C4 also possible. C4 also a possible move, by the way. What are chances Gukesh wins today? Chat, it is day number 3. Anybody joining in? This is Clutch Chess. यहाँ पे day 1 को every win got you 1 point. Day 2 को every win got you 2 points. And day 3 को every win gets you 3 points. And by the way, Bishop E3. That's a big mistake by the world champion. Oh my God. Suddenly C takes D5. And Magnus is close to winning. Bishop takes, D takes, knight takes, and bishop takes is the important move. जैसे ही यहां से मारोगे, there is knight takes, rook takes, and queen C6 attacking both pieces. भाई मैग्नस ने मिस कर दिया भाई, भाई गला खा मेरा, मैग्नस कार्लसन ने मिस कर दिया, बच गए। Okay, we saved ourselves there. 97 played, now C4 played, and now Gukesh is fine. So very close shave there. Bishop A6 now, and Gukesh is okay. Bach gaye bhai. That was difficult for sure, but I think if Magnus had thought for 30 seconds, he would have found it. Like he just didn't think there was anything there. Uski spidey sense tingle nahi kari. Magnus and Clutch are kind of synonymous. That's true. But I think, Gukesh also has clutched a few things, right? In the last 1.5 years. So I think it will also suit Gukesh, that title. वो लाइट आ रहा है, मतलब H3 played and now Rook B8. So काफी interesting position है. I think मेरे हिसाब से it's a dynamic position जहां पे
पोजिशनल प्ले ऑल्सो मैटर्स. टैक्टिक्स तो है ही, बट पोजिशनल प्ले बहुत मैटर करता है. कैन ब्लैक पुट अ नाइट ऑन C5 without getting captured? If he can, I think black is better already, because वो knight E4 attack कर रहा है, bishop pawn can hop into B4. I, ooh, you see already rook B4, positional play at its finest. It's just positional play. Why didn't you play यार? थोड़ा थोड़ी रेटिंग कम लगी, थोड़ी सी, लाइक 400-500 पॉइंट कम रहेगी भाई. आज की जीत पाया तो आप डांस करोगे भाई. डांस जीतने पे होता है भाई, हारने पे नहीं. हारने पे सदमा होता है भाई. Ticket, by the way, tickets are out by ticket bhai ka pata nahi, but tickets are definitely out for the Goa World Cup if you want to be there. And by the way, once you've played the move I mentioned, just take that, Gukesh. You have to. You cannot allow the knight to sit there at any cost. Alright, Sitaram, thanks a lot for the chat. Are you coming to Goa with players? We can even meet you. I'll be there for sure. I think we'll have Sahaj, me, Amruta, Rakesh, Tanya, Sagar, Harshit, all of us will be there. We'll also have all the players, of course. Now, humse milna aasan hai, players se milna, it depends on their mood, right? The results. But most likely, if you're there for a couple of days, you will end up meeting some of the players for sure. So be there if you can be there. बातें मार दिया है. एंड नाउ अगेन आई थिंक देयर आर सम वीक स्क्वायर्स. रुक B4 आ रहा है यहाँ पे, प्रेशरिंग द C4 एंड द A4 पॉन्स. सो इट्स स्टिल मैग्नस टेरिटरी, आई फील. एज प्लेयर पूछ रहे थे भाई. ओह, मैंने ढंग से पढ़ा नहीं भाई फिर. ओ क्वींस बात है प्लेड नाउ. आई थिंक ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट द रुक्स. सो रुक B4 ऑटोमेटिक मूव एज यू प्रेडिक्टेड. बाय द वे, यहां पे सोचना पड़ेगा हाउ डू यू गेट दिस रुक आउट. I am thinking knight E2 is one move you might consider, but the problem is C takes D5. If you take with this pawn, there is C4 trapping the bishop. And if you take with this pawn, then ye E4 problem hai, like E4, and suddenly it's a fork. So you can't play knight E2. So how do you get this out? And that's why bishop F1, right? With a similar idea of maybe knight E2, knight D2 or something, just to get the rook out somehow. कैसे बाहर जाएगा वो भी नहीं पता. Actually, there is no knight move that gets it out. So difficult. By the G6 played now, preventing knight F5. The bishop can also hop in via the H6 square to get to that important diagonal. Right now the bishop is blocked by its own pawn. So एक लंबा diagonal मिल सकता है भाई. Bishop looks so passive. Exactly, it is passive. But in this structure, the king's Indian structure hai, a bad bishop can, a famous quote hai, a bad bishop can be defender of the good pawns. So he can play a very good supporting role, right? So even though it's not really there in the limelight, like it's not the star of the game, it's helping everybody else win. And in my eyes, that's also a star. So I think Bishop F8 doing a great job making sure कि ये rook अच्छा है, king safe है. It's not easy for white to expand. D6 possible नहीं है. So it has a lot of tasks there. Hey, thank you. Thank you, Sitaram bhai. Of course, we'll love to see you there. यार. Be there at least for a couple of days. भाई एक दिन में मजा नहीं आएगा. And फिलहाल के by the way, rook D1, slight mistake by Gukesh, and apparently now CD5, C4 gives Magnus a much better position. This is looking difficult because जो बिशप की हम बात कर रहे थे वो बिशप भी खुलने लगा है. यही होता है भाई जब मतलब किसी बिशप की तुम इंसल्ट करते हो. वो निकल आता है फिर गेम में. नेवर नेवर अंडर एस्टिमेट द सपोर्टिंग एक्टर. Bishop is not passive because it's Magnus's bishop. That's also true, bhai. That's also true. Meanwhile, chat यहाँ पे 5 मिनट एटलीस्ट रुकेश टाइम पे आ गए हैं. At least that's good news. But then Magnus does not find the best moves. Queen C7 played, also a decent try. Idea काफी simple है. I want to play rook B8, double up my rooks. I also defend this pawn ताकि rook को मैंने आजादी दे दी. Now it can move because the knight was attacking this. So काफी logical चाल. Also defends the A5 pawn. काफी multi-purpose move है. GOAT Magnus, of course, he's the GOAT. Yeah, no doubt. Oh, Gukesh, that's my guarantee. भाई यार ऐसी भाई यार
थोड़ी अच्छी गारंटी दो, अगर 1 year वारंटी, एनी प्रॉब्लम वी विल रिप्लेस द प्रोडक्ट, जो क्लियरली जिन ब्रांड से मैं डील कर रहा हूं वो तो नहीं करते। आई एम टॉकिंग टू यू पेपर फ्राई, बट मेरा सी टेक्स मार दिया यहाँ पे। एंड नाउ C4 पास फॉर ब्लैक, pass pawn for black. So Gukesh under huge pressure now. This pawn has huge ambitions to queen. It wants to turn into the defining piece of the game. Can Gukesh stop this pawn first of all, and then can he create counterplay? He does have counterplay in this d5 pawn. Long term, this can also have the same impact as c pawn, but as of now, that's firmly blockaded. But c pawn उड़ रहा है भाई, वो दौड़ रहा है, इसको रोकना बहुत मुश्किल। तुषार कह रहे हैं सेम ओल्ड स्टोरी यार। मैग्नस के अगेंस्ट हर किसी प्लेयर की सेम ओल्ड स्टोरी होती है, बट आई स्टिल हैव होप, आई स्टिल हैव होप भाई। वेट करो, वेट करो, थामो थामो भाई थामो। मैस इन प्राइम, ही हैज 120 विन नो डिफीट, यूकेशन प्राइम हैज लूजिंग स्ट्रीक भाई। यार मतलब भाई क्रेजी है, मतलब यार कितना कितना भाई। वेट करो भाई, गेम खत्म नहीं हुई, वेट करो भाई, वेट करो। Knight e2, by the way, is a session. That's a nice move. You would love to put the knight on c3. I like that move. उसमें problem भी कुछ है. By the way, queen c1, Gukesh plays instead. I think rook c2 is a potential plan. उन्होंने अपना c2 square rook को दे दिया. So if you play c3, for example, here, in fact, the pawn is now pinned. I can just pick up your bishop for free. So एक tactical trap भी है, and rook c2 भी आ रहा है to pressure that pawn. So nice move by Gukesh. भाई हाँ भाई, गोवा वर्ल्ड कप की इतनी अपडेट्स आ रही है भाई अब तो, क्योंकि सो क्लोज, सो क्लोज। यो मंदिर भाई, व्हाट्स अप ब्रो? Gukesh has been a poor round form. We want to win, complete focus on. Yeah, I think he will be focused. यार, come on, nobody wants to win. Chad, let's be honest. Nobody in the world wants to retain that, wants Gukesh to retain that title than Gukesh himself, right? So he will work hard on it. By the way, played rook c2, nice move, bishop g7, and ये current position है Gukesh. Still, one good news, chat, time barabar hai. That's not happened in a single game yesterday. Not even a single game. So still, until the time is equal, you know what? I have hope. That's what matters. So time बराबर रखना भाई, time पे पीछे मत होना गुकेश। गुकेश पोजीशन थोड़ी सी वर्स चाहे। नाइट लू स्टिल अ पॉसिबल मूव, आई अग्रीड। इस नाइट के पास कोई ढंग के स्क्वायर नहीं है। इनफैक्ट नाइट d2 इज ऑल्सो अ मूव, जस्ट टू अटैक दैट पॉन अगेन। It would be draw. Draw would not be too bad. Would not be too bad. I'll take that draw, भाई। I'll take that draw right now. बाहर को अगर आपने देखा है तो अभी खालसन के फेवर में। गुकेश भाई ये नहीं करने का भाई, टाइम इतना लोगे तो भाई फिर तो मुश्किल है, फिर तो मुश्किल है भाई। फिर तो मुश्किल है। चल ट्राई करते हैं, व्हाट, साज भाई तो नहीं है। साज भाई को 50% पे कान हिलाने की मिलती है, तो हम भी भाई। अच्छा, मेरे को कान हिलाना आता ही नहीं है, तो ऐसे हिलाते हैं भाई को। होपफुली दैट वर्क्स, होपफुली दैट वर्क्स भाई। If that works, that will be crazy. Oh भाई, ये तो गलती हो गई। Okay, h4 h5, still roughly the same evaluation. What does Gukesh do now? The problem is rook c3 खेलोगे तो कभी ना कभी rook अटैक होगा, चाहे वो knight e4 से हो या bishop यहाँ घूम के आए। Also king h7 and bishop h6 also in the, जैसे आप knight हिलोगे, king h7 bishop h6 in the air। यो दिन भाई व्हाट्सअप। रोज आते हैं इस उम्मीद में, रोज आते हैं इस उम्मीद में कि आज जीतेंगे। रोज आते हैं इस उम्मीद में कि आज जीतेंगे। अरे आज नहीं तो कल जीतेंगे। वाह वाह वाह, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। डोंट वरी भाई, डोंट वरी। बट रूक ए3 नॉट अ ग्रेट मूव यहाँ पे। I mean, the idea is to, of course, control that c3 square. So if you play c3, I can just pick up that pawn for free. But it can also be attacked, right? Like queen c5, keeping an eye, bishop f8, keeping an eye. But the rook is rather vulnerable there. जीत गए भाई इनको। Looking lost already. It is lost. It is lost. But the thing is, material advantage nahi hai. Still complicated. Yeah, Magnus could make a mistake. Although right now he's not making any. Oh, bishop h6 incoming chat. Knight g4 played, pressuring f2.
And bishop h6 incoming. This is serious. Serious threats on Gukesh's queen now. Okay. Ooh. Bishop h6 पे क्या करेंगे? Because we can't play knight g5, right? I thought there is f6. Yeah, f6 is possible. So, okay, Magnus plays queen b6. Wow. You know what? इंजन चालू करते हो ना, पहले बिशप h6 बेस्ट मूव दिखाता है. You leave it there for 30 seconds, it shows queen b6. And that's what Magnus played. Magnus ki intuition is crazy. And you know what one of the best moves for white is? Knight h1. Second best knight. जब नाइट h1 नाइट h2 बेस्ट चाले हो तो भाई गेम थोड़ी सी खराब हो गई भाई लगता है. Magnus is insane, bhai. He is insane. Accuracy wise, 93.5. Gukesh, 88.1. These moves are almost impossible to find. True, true, true. Chad, by the way, let's not forget कि भाई 1000 लाइक करने हैं. डायमंड मेंबरशिप अप फॉर ग्रैब्स. जल्दी से लाइक कर दो भाई स्ट्रीम. लेट्स गेट टू 1000 लाइक्स. मेरा क्वीन e2 play. Okay, still fighting for his life here. Bishop h6 पे I think he wants to play queen e2 and defend the f2 pawn, attack the c4 pawn. Chat, let's go. अभी भी उम्मीद कायम है. जब तक है जहां तब तक हम लोग फाइट करेंगे भाई. हार नहीं मानेंगे भाई. He might win in the second match. Nice, right? Nice. Lost from might. Yeah. And now, but my question is, how does black finish off here? Okay, he can just take the pawn, actually. I don't see why you can't just take that pawn and then run down with the a pawn. I just don't see ki kya problem hai. Okay, bishop. Oh, knight h1 is the best move. Bro, you have to be kidding. Knight h1 cannot be the best move. Oh God. Second best move is knight h5, just giving the piece. Oh, this is sad actually. कोने में घोड़ा राकेश भाई का कोट है. जब अगली बार आएंगे तो कंप्लीट करेंगे, बट इतना भी कोने में नहीं जाना था भाई. एंड बाय द वे, लेट्स कीप इन माइंड नाइट h2, लेट्स से किंग g7, एंड यू डिसाइड कि चलो भाई अपन अब अटैक करेंगे. बिशप h2 इज चेकमेट. So, oh, knight h1 played. Damn, Magnus Carlsen is just cruising. He's just cruising right now. I'll watch highlights. Nice, Vinith bhai, nice. Oh, by the way, not the best move by Magnus. I think apparently pawn मार देना चाहिए था. G3, nice move, kicking the bishop away. But इस knight का क्या अब? That is the problem, right? It's completely stuck. It has no moves. Zero moves for the knight on h1. Come on, Gukesh. Bar jumping down further, taking that nosedive. यार क्या चल रहा है chat? Queen b4, best move played. Rook पे attack. Chat, I think this is gone. Rook b3 पे pawn से मारेंगे. Pass pawn मिल जाएगा. It's over. And queen attacked, rook attacked. Game over. If you don't take, then black takes the rook. I think it resigns. It is time to resign the first game. Yeah, first game will be resigns 19 seconds, and Magnus Carlsen crushes Gukesh for, well, the fourth time in this tournament, actually. Fourth time. That's crazy. Yeah, he resigns, and there it is. So Gukesh loses the first game. But okay, second game baki hai. Will start in exactly 4 minutes from now. Meanwhile, let's have a look at the Caruana Hikaru game. Standings ke liye ye bhi bahut important. Meanwhile, Magnus going to 14.5 points now. Wow. It's now on Gukesh's ego. यार ego के Magnus का skill ही वही है ना भाई. Ego ही तो break करता है. That is his main skill. Because after game will have no clue where he went wrong. I think most players who lose to Magnus have no idea. Like basically वो इतना
इतना आराम आराम से स्क्वीज करता है. पीपल समटाइम्स रियली लाइक, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड वेयर डिड आई प्ले द रॉन्ग मूव. देयर इज नो वन पॉइंट. भाई बोला था मेरी गारंटी है भाई. भाई अब अच्छी गारंटी दो ना यार अगली गेम के लिए, प्लीज प्लीज. आपका रियल सरनेम टिक्कू है क्या? ऑफ कोर्स भाई, टिक्कू. अब तो नॉर्वे में अरे ये क्या है भाई. ओके, दिस इज गोना बी अ ड्रॉ. सो अगली गेम बहुत जल्दी चालू हुई है चैट, बहुत जल्दी. नेक्स्ट गेम विल स्टार्ट. भाई मैग्नस से कभी नहीं हारा. ऑरा है. भाई कहाँ है वो ऑरा? दिख नहीं रहा है भाई. यू नो, अगर जंगल के शेर हो और जंगल में कोई आया ही नहीं, तो क्या आप जंगल के शेर हो? भाई एक टिक्कू वाली टिक्की कह रहे हैं मिस्टर नॉट जॉर्ज जी. चटनी हुई चाहिए साथ में, ग्रीन वाली, केचप, मतलब क्या चाहेंगे आप साथ में? 5 विन आएगी अभी गुकी की भाई. ऐसे होना चाहिए भाई फैन. ट्रू चेस फैन भाई, ट्रू चेस फैन. 5 विन आएगी. चेस ब्रिलियंसी भाई. सल्यूट टू यू भाई. Magnus is like Travis said. By Travis is not the best cricketer in the world. Not really. But Magnus is. Kashmiri Pandits, yes भाई. 23 points at the end. नहीं 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 नहीं. इतना भी नहीं कर सकता मैग्नस. टिक्कू शादी कर ले, कर लेंगे भाई, कर लेंगे यार. इससे पहले सारे बाल झड़ जाए, कर लेंगे हम भी शादी. What makes Magnus so great? I think Magnus, ये मेरा मानना है. I think Magnus at the right point got to learn from Kasparov. Kasparov ने 2-3 साल कोचिंग दी मैग्नस को. I think that was the, of course they were, he was most talented, hardworking, but I think that's what made him the greatest player of all time. If Magnus sat down with Gukesh or Prag, coached them full time for 3 years, imagine how strong they would become, right? I think that's one of those reasons. भाई से ऑर्गेनिज्म. हाँ भाई, हम भी ऑर्गेनिज्म, आप भी ऑर्गेनिज्म, सब ऑर्गेनिज्म है भाई. व्हाट अबाउट चेस इंडिया यूट्यूब चैनल? व्हाट अबाउट चेस इंडिया भाई? ही हैज टू प्ले फियरलेस. भाई फियरलेस काम नहीं कर रहा है, दैट्स द प्रॉब्लम. साहब आई लव यू, थैंक यू ब्रदर. I think chances for Gukesh to win this tournament. Yes, I still think there are chances कि first आ सकते हैं. But now we are in that territory कि जीतना पड़ेगा. Draw से काम नहीं होगा. That's the problem. Ima- Imagining my Twitter feed the next day. सेफ खेलो भाई, ही ड्रॉ हो, भले ही ड्रॉ हो. यार 3 पॉइंट मिल रहे हैं विन के लिए, तो तुम देख लो. विन का के लिए खेलने का पूरा इंसेंटिव है अभी. Gukesh will score 15 points now. So you're saying 5 wins, yeah? चैट मेरा से सवाल है, ठीक है? सो डू यू थिंक कि जो अगला गोट होगा, चाहे वो इस जनरेशन में हो, अगली में हो, वॉट एवर इट इज, ही और शी विल बी इंडियन? और डू यू थिंक कि मे बी गुकेश प्रागार्जुन में से वो गोट कोई शायद ना बन पाए, या कोई अगला प्लेयर नहीं हो? डू यू थिंक ही विल बी इंडियन, येस और नो? जो जो भी अगला गोट होगा. आई थिंक मैक्सिमम लोग यस लिख रहे हैं. आई सी 70-30 इन द फेवर ऑफ यस. एंड लेट्स से कि आप ओके जो नो कह रहे हैं उनका तो आंसर सिंपल है. बट लेट्स से कि बाय द वे सेकंड गेम चालू होने को होगी यार. लेट्स गो टू सेकंड गेम. अबाउट टू स्टार्ट, लेट्स वेट फॉर दिस. सो ओके ठीक है, चलो मान लो कि, अब मान लो कि इंडियन है. सो हु हैज द बेस्ट चांस टू बिकम द नेक्स्ट गोट नाउ? कम ऑन, व्हाट डू यू थिंक चैट? Among all the Indians, you are not limited to Gukesh, Prag, Arjun as well. सो मैक्सिमम मुझे प्रग दिख रहा है चैट में. ये अंटार्कटिका एक बंदा लिख रहा है, ये कौन से जैसे मुझे पता नहीं. बट आई कैन सी मैक्सिमम ऑफ प्रग, राइट?
So okay, let's assume it's Prag, ठीक है? When do you think he becomes the GOAT then? Is the final question. Because मेरे को लगता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप नेक्स्ट ईयर है, राइट? सो एनीबडी हु इज द गोट, एटलीस्ट अगर अगले 2-3 साल में बनना है, तो यू हैव टू प्ले द कैंडिडेट्स, राइट? Without playing the candidates, you can't really be the GOAT, I feel. Would you agree? Yes or no? So candidates में तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा भाई. That's what I feel. एंड अगर ऐसा है, तो वर्ल्ड कप इज रियली अ बैटल for a lot of things. It's a battle for the World Cup, gold medal, of course. It's a battle for the candidate spot. It's also a battle for potential GOAT title. Why at the end of the cycle, 2-3 साल बाद. So बहुत कुछ दाव पे है वर्ल्ड कप पे भाई, बहुत कुछ दाव पे है. You cannot miss that event as a player, as a fan, as anybody who is part of this chess ecosystem. बहुत बड़ा इवेंट है भाई ये. This might dictate the chess trend for the next, I don't know, 5 years or so. बहुत important. गेम चालू हो गई है? नहीं भाई, अभी चालू नहीं हुई है as far as I can see. Wait, what is this? Oh, चालू हो गई है. Yes, yes. Oh, चालू हो गई है. Yes, we have it. So e4 e5, एक और स्पेनिश, मैग्नस इस बार. Oh, गुकेश जी 6 खेले. Oh, that's very interesting. Okay, knight f6, h3, mahramara, अनपिन किया, g6. Okay, काफी solid and unique structure गुकेश का so far. एंड टाइम पे भी बराबर आगे चल रहे हैं, सो नो स्ट्रेस. फिलहाल के लिए सब बढ़िया है. आई थिंक द मेन फैक्टर इज कि कितनी देर तक वो ये मेंटेन कर पाएंगे. दैट्स द क्वेश्चन. आई थिंक दैट्स द मेन क्वेश्चन. जीएम नीरुष नीरज टिक्कू भाई, मेरे बेटे का नाम भी चूज कर दिया आपने यार. ये तो करने दो मुझे भाई. जिंदगी में बहुत कम चॉइसेस खुद करने को मिलती है इंडियंस को भाई. बेटे का नाम भी चूज कर, पोल करूंगा क्या, यूट्यूब पोल, बेटे का नाम क्या रखना है? मैग्नस रखता हूँ भाई, मैग्नस टिक्कू भाई. दैट विल बी क्रेजी एक्चुअली. बाय द वे जिसे खेल दिया है कार्लसन ऑलरेडी 1 मिनट पीछे. सो थिंग्स लुकिंग ग्रेट फॉर द वर्ल्ड चैंपियन सो फार. कि टाइम पे बढ़िया, पोजीशन भी डिसेंट लग रही है. मैग्नस की क्वीन थोड़ी सी कैन बी अटैक्ड लॉन्ग टर्म. ओ भाई, मैग्नस को 2-0 करना है भाई. मैग्नस कह रहा है भाई अब मैं आगे निकल गया, अब मैं बहुत आगे हूं मेरे भाई, तुझसे मैं डबल पॉइंट्स पे हूं, अब मुझे 2-0 करना है. आई वांट टू क्लोज द मैच राइट नाउ. भाई साहब, मैग्नस अब नहीं छोड़ेगा भाई. अब गुकेश हैव टू प्ले आउट ऑफ स्किन. नाइट c5, लेट्स गो, लेट्स सैक द बिशप. Come on, come on, come on, come on. But told same in last, Gukesh had more time. By the way, knight c5, best move played by Gukesh. I think attacking the bishop. कई बार ना, it's good to ask the bishop कि आप क्या करोगे, वापस जाओगे, मारोगे, मारने का चूज किया, लेकिन इसका मतलब व्हाइट का बिशप पेयर एडवांटेज गायब हो चुका है. एंड टू बी ऑनेस्ट चैट, I like Gukesh's position here because knight e6 आएगा and the knight is controlling the d4 square. So तभी white ने instantly d4 खेला before the knight can come to e6. Magnus knows what he's doing. Can Vance coach Indian players for 2 to 3 years? I mean, that would be an ideal situation कि ऐसा कभी हो. But if I understand Magnus well, if there's an Indian player whom he would ever coach, that would be Prag. Because he has that connection with Prague. He considers him a friend. In fact, when Prague, qualified to the top 3 in the World Cup, I defeated Hikaru. Magnus came, patted him on his back. So I think Magnus' point of view, if anybody is going to help at some point, it's going to be Prague. Magnus Gukesh is a free point for Magnus. Yaar, you know what? This game is the last chance for Gukesh. Tournament khatam ho raha hai. And he's not going to play Magnus again for a while, at least till the World Rapid Blitz. Maybe GCL Magnus nahi hai, so World Rapid Blitz. So this is the last moment he has. takes. Okay, now pawn hanging. Let's play Queen D7. वैसे भी Queen is well placed, defending F7.
could come to the king side. अगर white queen थोड़ी naughty होके side में जाएगी तो हम यहां होके king के पास आ सकते हैं. So very logical move. Let's put the queen there, Gukesh. Let's not waste time. I think यहाँ पे एक ही अच्छी चाल दिख रही है मुझे. You can also play bishop g7, also possible. But apparently bishop g7 के बाद there is this move e5, which is quite interesting because bishop takes के बाद there is this check here which is possible. Also bishop g5 possible, and suddenly थोड़ा सा black uncomfortable. भाई भाई टिक्कू भाई अपनी स्टोरी सुनाओ. टिक्कू भाई द अनटोल्ड स्टोरी वो अनटोल्ड ही रहेगी. बाय द वे नाइट c6 के बाद queen f6 was the best move. Gukesh plays queen d7 and now e5 is the only move for Magnus. I think he'll find it, by. I think he'll find it. E5, a brilliant move for Magnus to basically defend the knight and threaten a discover attack on the rook. Draw का actually 1.5 point है, 50%. So 1 point कल था. Come on, come on, come on, chat. Gukesh, this is a crucial moment. Magnus Carlsen thinking. He'll come up with the move. He'll come up with the move, chat. I mean, आज तक कब गलती करी मैग्नस ने यार? कब करी गलती मैग्नस ने आज तक जो आज करेगा? 1 point on St. Louis stream. क्या बात कर रहे हो? That's a bit weird to me. So, can we confirm कि ड्रॉ के लिए कितने पॉइंट्स हैं आज? I think it should be 1.5. 1 wouldn't make sense because कल एक था तो आज 1 कैसे हो सकता है? वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी कब? चैट, वर्ल्ड कप का मैं आपको स्केड्यूल बताता हूं. सो वर्ल्ड कप का ओपनिंग सेरेमनी 31st को है. फर्स्ट को फर्स्ट राउंड है at 3 p.m. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ नॉकआउट इवेंट. सो डे 1 को राउंड 1, राउंड 1 का फर्स्ट गेम, देन नेक्स्ट डे राउंड 1 का सेकंड गेम, एंड थर्ड डे को टाई ब्रेक. यही फॉर्मेट कॉपी होता रहेगा. 3 days, 3 days, 3 days. 10th and 20th are the rest days. And 26th is the last day. So बहुत एक्शन मिलेगा, बहुत मजा आने वाला है. It's one, really? तो हमारा स्टैंडिंग गलत है मतलब. So our standings is wrong maybe. Can we fix it somehow? हाँ, if it's possible somehow to fix it. अगर गलत है तो. By the chat, E5 has been played after a 31-second thing, and Gukesh under pressure now. He has to find castles, I think. He has to castle. अगर आप ये pawn मारते हो, that is game over. Knight takes E5, attacking the queen, attacking the rook, and threatening queen F7 checkmate. So you have to find castles here. Varna, goodbye game. Who is better player of India currently according to you? I think ये साल Prag has been the best player. Gukesh का साल उतना अच्छा नहीं गया compared to last year at least. So I'm going to say maybe Prag right now. But, you know, World Cup ऐसा event है, knockout है, which is completely different to anything else you play in the chess world, right? Knockout बहुत rarely होता है. So because of that, it could completely change. Yep, we have the tickets, by the way. The tickets link उसका pinned है chat के अंदर. If you want to visit the venue, पहली 2 round की tickets release हो चुकी हैं, November 1 to November 6th. So you have the chance to go there, book the tickets, and automatically become a part, IRL part of this event. It's a unique event in history. जहाँ पे knockout event है. So this is the link. I'm sharing it again. If anybody wants to visit the venue in Goa, see the players in action, you can do so right about now. आई नो समय रहने की टिकट नहीं है, आज रात को भरेंगी नहीं, बट कर लो भाई बुक अगर आ रहे हो तो. यू नेवर नो, यू नेवर नो. इंडिया अच्छा खेलने लग गए ना तो पूरा फुल हो जाएगा 1 सेकेंड में. याद है जब गुकेश वर्ल्ड चैंपियनशिप में डिंग के साथ जब टाई ब्रेक के लिए टिकट्स आउट हुई थी, आई थिंक कुछ 9 या 11 मिनट लगे थे सारे टिकट बिकने में. जस्ट सेइंग. By the way, Queen G4 played यहाँ पे best move, also good move Gukesh, and now Magnus has to find Queen D5. Not an easy move. Will he find? I think if you take on G4,
pawn takes g4, अब मेरा king center में भी safe है, ed6 no issue, and ये knight थोड़ा trap सा भी लग रहा है मुझे, to be honest, and that would be very awesome for Gukesh, very awesome, that would be awesome for Gukesh. So queen d5 has to be played. Of course rating increase हो सकती है सूर्यांश भाई, it is a rated event, it's one of the strongest events in the world. जय श्री राम भाईजान, अरे भाई नमस्कार प्रणाम, आ जाओ भाई लोग। क्या करेंगे मैग्नस, मैग्नस भाई एक गलती तो बनती है, फॉर ओल्ड टाइम सेक, यू नो, Magnus recently became a dad. I don't know if everybody knows this. So I don't know how much time he had to practice in recent days. So maybe he was busy with family life. Maybe his tactics might not be at his peak. Um, and you know what, Magnus, maybe एक blunder कर सकते हो यहाँ पे. A funny story to tell to your family later on. Just kidding, भाई. खेलो खेलो भाई. Yep, okay, so buy in first round. So सारे top seeds को round one में buy मिलता है, and they will of course get to play in round two. By the second round, I remember, I think it is Nihal versus Divya. So you will see a bunch of India versus India matches. Of course, Divya has to win, but you will see a lot of matches जहां पे दो Indians का match है. Just like the last World Cup, जहां पे Arjun got knocked out by Prague. सारे आपका एयर गैम रुकेश के अगेंस्ट काम करता है. आई थिंक दैट इज मैग्नस, नॉट मी. बाय द वे, मुकेश भाई मतलब मतलब नॉट योर फॉल्ट भाई, मैग्नस अलग ही लेवल पे भाई. By the way, queen d5, now queen e4 check, trading queens would be a nice move, but it's not easy to do for Gukesh because आप अपने काउंटर प्ले के चांसेस भी खो रहे हो, बट करना पड़ेगा भाई. राइट नाउ दिस इज अ ह्यूज थ्रेड, ed6 आ रहा है, दिस कैसलिंग आराम से, and then rook e1 looks uncomfortable. Best player of India in all formats. That I think has to be Prag or Arjun. At least that's my belief. By the way, Castle's played. Not question is you can't take this pawn because knight is hanging. And if you can't take this pawn, matlab you have to defend this. But I can't play rook d8 because knight controls that square. So I basically have to say goodbye to my pawn on d6, I think. So you have to go for counterplay. काउंटर प्ले क्रिएट करने के तरीके क्या है? मे बी यू कैन प्ले रुक e8 कि आप मारोगे तो मेरी रुक को ओपन 5 मिलेगी. मे बी दैट्स द प्लान. बट व्हाट, ओ ही टेक्स दैट पॉन. मैग्नस कार्लसन रुकी वन खेल सकते थे लेकिन नहीं निकाली बेस्ट मूव, सेकंड बेस्ट मूव निकाली, एंड मैग्नस इज स्टिल बेटर. एंड नाउ क्वीन e4 ओनली मूव. भाई ओनली मूव तो खेलनी पड़ेगी भाई, ओनली मूव तो खेलनी ही पड़ेगी. कम ऑन मुकेश. ब्लू आर देख के डर लगता है भाई जब भी ओनली मूव होती है. यार द प्रॉब्लम इज यू कैन ग्रैब दैट पॉन बट इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. इट गिव्स वाइट फ्री मूव्स, समझ रहे हो? बिशप टेम्पो से आया, इट्स लाइक वाइट पीसेस आर सो एक्टिव कि वो पॉन तो एक्स्ट्रा मुझे मिल ही जाएगा. दैट इज बेसिकली इट. लाइव बोर्ड प्लीज भाई, सब लाइव है. हमारी लाइफ, मेरा बस चलता है, मैं पूरा दिन लाइव स्ट्रीम करता भाई. फिलहाल के लिए सब कुछ लाइव है. 97 check is possible. I think rook a d1 again, pressuring that d6 pawn. Okay, bishop e7, and now rook f c8 only move found by Gukesh. Okay, I mean that was not difficult. Yes, squares ही कितने कम थे. And now how does Magnus continue? Okay, so if you take the queen, for example, I think Gukesh is winning this game because rook attacked है, sorry, knight attacked है, knight d2 भी आ रहा है, forking rook and pawn, bishop भी थोड़ा trap लग रहा है मुझे, and there are no good squares for the knight, right? Knight b4, suddenly rook c4, and black is winning. So the position is still complicated, chat. Do not discount Gukesh just yet. This game is very interesting right now.
I think this is the best chance Gukesh has had in the entire event to beat Magnus. Oh, रुकिए he won. Magnus plays a solid choice, basically saying कि queen trade करो और draw ले लो. But I think this is a very interesting position for Gukesh. Chances to have for sure. I like his bishop. I like his knight. But now it's a bit more solid, yeah? Magnus played the safe card. Tikubai, Gukesh didn't win a single event after becoming world champion. What do you think of Gukesh? Who's better? Um, he did win every event in the book last year. So 24 में आपको याद हो वो पहले कैंडिडेट जीते, ओलंपियाड जीते, वर्ल्ड चैंप जीते, तो इतने इवेंट तो लोग पूरे लाइफ टाइम में जीत नहीं पाते. सो मे बी ही डिडंट विन एनी मेजर इवेंट इन 2025, बट वो 2024 में इतना बढ़िया खेले कि इट कॉम्पनसेट्स फॉर दैट फॉर श्योर. सो आई थिंक only time will tell whether he holds on to his title. We are hoping he does. But regardless, जो भी challenger होगा मुकेश का, it will not be an easy match for him, right? Gukesh बहुत tough fight देंगे. Yeah, Prag won Uzbek in Tata and maybe also one more actually. But I think Prag also didn't have a great 2024, so it can sometimes balance out. By the way, 93 played attacking the rook e4, nice move. Usually अगर आप rook c4, rook a4 खेल सकते हो. यार ये क्या चल रहा है यार. भाई साहस भाई तुसी ग्रेट हो भाई. सही कहा था भाई, एफ पॉन को छूना ही नहीं चाहिए भाई. जो बंदा छूना है इसको क्यों छूना है भाई एफ पॉन को यार. अरे यार रुकी सिक्स, सडनली दिस पॉन इज हैंगिंग, दिस पॉन इज हैंगिंग. हाउ डू यू सेव बोथ? यू कांट. मैग्नस, अरे यार मैग्नस भाई गलती भी तो नहीं करते हैं यार. उफ, इट इज गॉन आई थिंक. बिकॉज चैट एक बार ये मर गया, देन द डी पॉन इज क्वीनिंग. Just rook d6. Oh my god. The best variation देखो क्या है, knight d5, hoping rook d5, but now bishop g5, and wherever you move the knight d7 check wins the rook. Wow, happened on the board. Oh nahi. Oh, that's hard. That's hard. Magnus equal to living stockfish. Bro, you're not far away, man. Like, he's so good. He's so good. I think this tournament is the end of rivalry. Um, I mean, end is a strong statement, but it's definitely putting some context. Ki right now, Magnus is just clearly better. Yeah, I think that's for sure. टूटा हुआ साज हूं मैं. गला खराब होना खत्म है. मेरी आवाज पूरी, मतलब कई लोगों ने कहा, मैंने नहीं कहा है, कई लोगों ने कहा है कि मेरी आवाज मतलब लता मंगेशकर की डॉगी जैसी है, मतलब काफी सुरीली. तो अभी गा नहीं सकता, बट गला खराब है, बट कभी और. 6-0 नहीं, आई थिंक. बाय द वे दैट्स ट्रू. मैग्नस गुकेश का स्कोर में मैग्नस विल हैव वन 5 out of 6 games. 5.5 हराया उसने गुकेश को, मतलब. भाई that's a statement. That's a statement actually. This is not what we hoped for, and I'm pretty sure this is not what Gukesh hoped for when he decided to play, clutch chess right 2 days before the event, like the World Cup. But okay, his hope is now to win the other games against the other players. That's his hope. That's true, Manoj. I think Prague does put up tougher resistance against Magnus. I think it's also because of how much respect
Magnus has for Prag. So I think Magnus maybe it's more prone to blunders against Prag, I think, because he respects him more. It's just like everybody else respects Magnus. Okay, not the best move, but still looking winning. Magnus is not even in his prime. True, he's not. अब देखा नहीं जा रहा साहिल भाई यार. I agree. But the thing is, if Gukesh can come back, defeat the other players, maybe there is some hope. Well, for second place, first place तो गया भाई. It's going to be Magnus now. 17.5 पे पहुंच जाएंगे वो. उससे आगे जाना मुश्किल नहीं हो, मुश्किल नामुमकिन होगा भाई. And now maybe just 96 is simple. Attacking the rook and the bishop and khatam. Looks like an easy win now. Was there rivalry? You comparing the GOAT himself to normal GM? भाई normal GM थोड़ा disrespectful है नहीं भाई. World champion है भाई. मतलब थोड़ा सा. He's not normal GM. Okay, she's books and Magnus sees chess boards. That makes him GOAT. Who invite? ये क्या है भाई? अरे यार ये क्या है भाई? रुकेश जीतेगा तो साहिल भाई पिज्जा पार्टी देंगे. अगर रुकेश फर्स्ट आ गया, कहां से आएगा? मुश्किल है भाई. इफ ही somehow ends up first, तो भाई चैट में एक बंदे को पिज्जा मेरी तरफ से. बट इट्स नॉट गोना हैपन नाउ. ओके. ओके, व्हाट इज होपिंग फॉर इज दिस. यहाँ पे थोड़े चांसेस मिल सकते हैं गुकेश को टू ड्रॉ दिस गेम. बट आई थिंक मैग्नस कैन जस्ट प्ले rook d7, get the rook to the 7th rank, and this is a very very strong attack. Very very strong attack. Magnus in his prime. He's not even in his prime. That's the crazy part. कौन कौन ऐसा प्लेयर है who's been following chess since 2013 and 14 when Vishy played Magnus? कौन कौन है भाई? कई लोग तो पैदा भी नहीं होंगे तब, बट कोई बात नहीं. कौन कौन से लोग हैं जो तब से चेस देख रहे हैं भाई? Like I remember watching Magnus versus Vishy on television, when RB Ramesh सर, तान्या, आई थिंक इट वाज, इसका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूं मैं यार. लॉरेंस ट्रेंट, ऑल दीज गाइज वर कमेंटेटिंग ऑन टेलीविजन, आई रिमेंबर. एंड लाइक उसके एक दो साल बाद ही आई थिंक वाज मैग्नस पीक, राइट? सो यू आर राइट, दिस इज नॉट इवन ए पीक. So in terms of debate for GOAT, I think there is no doubt Magnus is the GOAT by. Like there is not even a speck of doubt. So Rook D7 played again. Knight C8, Knight F8, best move again. Wow. Wow, you can't even take, yeah, because Bishop H6 here and checkmate. Wow. Beauty. Following Sinton 7, she played Kramnik. अरे बाप रे यार, मेरे को याद है. Crazy World Championship. I don't think it's mental strength, Priyajit. I think mental strength wise for sure. And as Gukesh loses, of course, Chad, he can still defeat Hikaru and Caruana and have a good event. I think second place here would be fabulous. And वो देखेंगे possible है कि नहीं. अगला game will be against Hikaru starting very soon. But I think it's just about chess skills. Magnus is the greatest human ever to sit in front of a chessboard. Ever. And let's not put it into 11.5.5. The score for Magnus Gukesh in this event has been 5.5 is to 0.5. So it's been a pure domination for Magnus. Wow. So Gukesh versus Hikaru कब करते हैं भाई? Magnus का तो गया. Gukesh wins, Hikaru wins, and draw. Gukesh took his chances against the Magnus champ. I think, Gukesh is ambitious. There are players who would play something safe against Magnus and try to draw the game. That's not Gukesh's style. He will try to go for the win. And that's how it should be. Now, it does mean that you might not see draws. In fact, when Gukesh took a draw, जब याद है
ग्रैंड चेस टूर जागरेब के फाइनल राउंड में ड्रॉ लिया था. वी ऑल फेल्ट लाइक ड्रॉ क्यों लिया. It doesn't suit Gukesh. So it's okay he goes for the win. But of course, right now Magnus is showing, yeah, he is the best. I can't watch this anymore. रुको रुको, जीतेगा भाई जीतेगा. थामो 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 थामो, जीतेगा भाई. भाई दूसरा गेम देखो. तो क्रिकेट देखोगे, फुटबॉल, लूडो वूडो कुछ दिमाग में चल रहा हो, क्या देखोगे भाई. By the way, let's go to Caruana's game. Caruana apparently crushing Hikaru Nakamura. Yeah, he can't come first now, user. I think Magnus is finishing first. इसमें तो खत्म हो गया. I think second place is possible. यार अकेले कमेंट्री करके ना मजा बहुत आता है कई बार, बिकॉज आई गेट टू टॉक टू यू गाइज. बट गले की ना भाई पूरी बच जाती है भाई. डे वन को मैं क्या चिल्ला रहा था, वाइब में था. और गले ने कहा हम चले जी. गला गया, गुकेश के पॉइंट्स भी गए भाई. हॉरर स्टोरी स्टिल बेटर देन राम गोपाल वर्मा की आग. इफ यू हर्ड ऑफ दैट मूवी. साले मुझे ही बुला लो कमेंट्री के लिए. आ जाओ भाई आ जाओ. भाई एक्चुअली इस फॉर्मेट में अगेंस्ट मुकेश का सब वीक है. मैक्स अगेंस्ट नो, आई एम श्योर एवरीबॉडी इज वीक, उसमें डाउट नहीं है. बट 5.5 इज अ बिट, yeah, it's a bit tough to digest. कब आए मुकेश का फॉर्म. आई होप वर्ल्ड कप में आए. दैट्स द आइडियल सेटअप. मतलब दैट्स द ड्रीम. बट imagine being Gukesh. Like, I don't. I hope he wins the next two rounds. But let's say if he doesn't do well here, assuming that he will take that flight to India. It's going to be a long flight. 16 hours, 20, not 16 hours. It's going to be most likely 20, 25 hours. It's going to be a long thing, right? So, yeah, I think Gukesh will have to go back to drawing board again. As of now, Magnus is Magnus. ब्रिंग समय इन योर स्ट्रीम. कई लोग कहते हैं समय लेना को बुलाओ. बट समय भी तो हमने हमने प्रोड्यूसर ही समय नाम का हायर कर दिया है. इनफैक्ट उसका समय नाम था भी नहीं, हमने समय नाम दे दिया उसको कि भाई मतलब लोग समय की डिमांड करते हैं तो वी कैन ऑलवेज गेट यू ऑन स्क्रीन. Why Chessbase India stopped live since last 2 weeks? So मैं मैसेज करता हूँ सागा भाई को कि 2 हफ्ते से रिपोर्ट नहीं आई भाई, क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस, व्हाई इज देयर नो लाइव. भाई मुझे क्या पता यार. सागा भाई यूएस में है तो ही इज बिजी. ही वाज शूटिंग सम कंटेंट एंड सो ऑन. बट एग्जैक्टली लाइव क्यों नहीं गए भाई, ये मुझे पता नहीं है भाई. Bro, why Magnus not in candidates? He is bored of candidates. He is bored of winning. He doesn't like the format as well, yeah. So he's that good. I mean, now we say Magnus ka ego hurt again. I think maybe at that point it was a bit hurt, but now he's okay. He's defeated Gukesh enough times, I think. Vijayan Prime 1996 में था क्या? Um, maybe not. Maybe later actually. But very hard to choose a certain point. Because he did win 5 world championships later. So I would guess somewhere around that time would be his peak. But yeah, very hard to choose a particular moment in time. So good that you get bored that knowing a challenge you exactly. And the thing is, I think ऊपर पहुंचना मुश्किल तो है ही, but maintain करना, to have that drive year after year, to constantly see at top, like Magnus is insane. Like, he is the chess player you want to be. You don't want to just be a world champion. Like, if you look at how everybody thinks, like every chess player wants to be a world champion, right? But ideally, you want to be Magnus. You don't want to be like the world chess champion. You want to be the greatest player of all time. By the way, very important. Queen यहाँ के बदले रुक भी वन खेलते हो तो रुक A2, King A2, रुक A7 is checkmate. So be very careful, bhai. Magnus peaked after 23. I think the
two reasons. One, you're right partially. I think it's not a fair comparison. Also, I think the world has changed. Nowadays, it's very easy to gain knowledge. So you will see younger and younger world champions. For example, at Dogmas, 14 साल की उम्र में 2650 है. So you will see younger world champions as we go along. That's the first point. Second, Magnus was world number one. I think like he was 28 plus at least at the age of 18, at the age of 19, I think. What do you think? Who's going to win the World Cup? Choose only one player. यार एक प्लेयर चूज करना है, चूज केमर भाई. अलग ही फॉर्म में बंदा. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट ही ऑलमोस्ट नॉकड आउट मैग्नस लास्ट टाइम. हेलो साहिल भाई, कैसे हो आप? अरे अरे अरे, आप तो पहले से फॉलो कर रहे हो भाई, मजे ले रहे हो पटेल जी. ठीक है पटेल जी, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा. हाउ आर यू नॉट काउंटिंग कारुआना टू विन दिस टूर्नामेंट? भाई कारुआना का फोटे नहीं है रैपिड ब्लिट्स. उनका फोटे है क्लासिकल. बोर्ड फिक्स करो. भाई यहाँ रिलेशनशिप फिक्स नहीं हो रहा, तुम्हें बोर्ड फिक्स करना है यार. कहाँ भाई, बढ़िया है बोर्ड भाई. केवल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है लाइफ में, सब कुछ नहीं मिलेगा. साल भाई, मैग्नस जैसा बंदा कभी नहीं आएगा. कभी तो आएगा. आई थिंक एक टाइम पे फिशर थे, एक टाइम पे कार्पोव थे, फिर कस्पारो आए, फिर मैग्नस आए. हर टाइम पे लगता है कोई और से बढ़िया हो नहीं सकता. बट कभी ना कभी आएगा. ओ अच्छा, बोर्ड अटक गया. सॉरी सॉरी भाई. सॉरी सॉरी, माय बैड. माय बैड ब्रो. या दिस इज द करंट पोजीशन. Ooh, check. Okay. Black is better, but white also has an attack, right? Check, 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 check. यूपीआई चल रहा है. साहिल भाई, हैंड्स जीतेगा वर्ल्ड कप. देख लेना. देख लूंगा भाई. कर लूंगा फील. साहिल भाई, आपका कॉलेज डांस देखा? अच्छा, अरे भाई ये कहां देखे तुमने भाई? ये कहां से तुमने ये नगेट निकाल दिया भाई? क्या बात कर रहे हो? बाय द रुकी वन खेल दिया. ओके. थ्रेटनिंग रुकी थ्री चेक. अ डेडली चेक बाय द वे. क्वीन F3. नाइस मूव बाय कारुआना. वो so good that losing a one game tournament is breaking news that भाई जब मैग्नस हारता है तो मोदी जी ट्वीट करते हैं भाई. इतनी बड़ी चीज है कि जब मैग्नस हारता है तो मोदी जी ट्वीट करते हैं भाई. दैट्स क्रेजी. By the way, okay, still Black King is a bit weak, so anything can happen, chat. By the way, मुकेश, अगली गेम चालू होने वाली है बहुत जल्दी. लिंक तो नहीं मिलेगा भाई, उसने कैसे ढूंढना मुझे पता नहीं है. हर चीज का लिंक नहीं मिलता है भाई. क्या खुद मेहनत करनी पड़ती है. ओ G5 ओनली मूव. Check. King has to come up the board. Bhai, don't tell me this is gonna. Hikaru trying his level best. You can't give any more checks now. Queen H6, I think just F6 maybe. Karuna trying to convert. Apparently, यहाँ पे D2. Oh, error. Queen B3 threatening Queen B7 check. Will be very strong. ये होता है जब किंग कमजोर होता है. ध्यान से कीप योर किंग सेफ इन ऑल चेस गेम्स. 4 सेकेंड, 3 सेकेंड. भाई खालू जीत ही ना जाए, मिला जीत जाएगा भाई. चेक. किंग E7 check. Oh, this is tough. This is tough. This is really tough. Apparently, you can just take the pawn. Oh, that's a blunder again. Approximately how many games do top chess players remember in their minds? For top chess players, it's thousands and thousands of games. Like you can give them a position and वो बता देंगे ये 1996 में इन दोनों प्लेयर्स के बीच में खेली गई थी और ये हुआ था इस गेम. अगर कारुआना विनिंग नाउ, क्वीन बनानी पड़ेगी एंड द गेम इज ओवर. या दैट्स इट.
ओके सो दैट्स गेम ऑफ चैट। अगली गेम चालू होने वाली है। इट्स गोना बी अ मैच बिटवीन हिकारू नाकामुरा एंड गुकेश। डे वन को गुकेश ने हराया 1.5 हाफ। डे टू में हिकारू ने हराया 1.5 हाफ। अब डे थ्री डिसाइडर होगा हु इज गोना बी द डोमिनेंट प्लेयर। सो लेट्स फिगर इट आउट। इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ अस। कुछ ही मोमेंट्स में पता लग जाएगा चैट। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। I think Hikaru को गुकेश आ सकते हैं. Magnus might be difficult, but Hikaru is doable. Let's hope for the best. Yeah, let's hope for the best. Jethalal is the real goat. Hikada is similar to my last game. Nice. Nice, nice, nice. Sahil for the win. Thank you, Architect जी. मैं भी कभी कभी जीतता हूं, पता है। एक चीज मैं नोटिस करी चैट, समथिंग हैपेंड रिसेंटली व्हिच माइट बी एप्लीकेबल टू योर चेस एज वी वेट फॉर द ओकेश गेम टू स्टार्ट। I had been trying to get my bullet rating to 2600 for a long time. Like it had been 2 years. But कभी हुई नहीं। हमेशा 2597, 2598, 99 भी गई थी आई थिंक। एंड वंस आई क्रॉस 2600 एक बार, आई कुड डू इट एट विल। लाइक एवरी थर्ड डे आई विल बी 2600। मैं 2650 तक होके आया ऑलमोस्ट। So I think psychology is a huge part of any milestone. And अगर गुकेश को यहां जीतना है ना, he will need to believe like he can just crush Caruana and Hikaru 2-0. And if he does that, I think यहां पे सेकंड प्लेस तो आराम से मिल जाएगा। बस 2600 भाई, बहुत 2650 यार एनएम के लिए क्या बात कर रहे हो तुम। My prediction is 2-0 in favor of either Naka or Guki. Both are really searching a win and both need to boost their confidence. नहीं, I think it's going to be 1.5 half. जो साइड जीतेगी दूसरा गेम ड्रॉ लेगी, that's my guess. बट पहली गेम में हिकारू के वाइट है, so गुकेश डे वन को ब्लैक से ही जीते थे. So let's hope so he can conjure the same magic. Can you say something about Nansky? I think Nansky, as I mentioned earlier, मेरे favorite commentator थे भाई. I think मुझे याद है this was Ding और Nepo की World Championship. उस टाइम पे I was not streaming. I don't think Chessbiz India was streaming, or I don't remember if they were streaming, but उस टाइम पे I just watched Darren Nansky start से लेके end तक every day. जिस दिन वो नहीं था, I was missing him कि भाई क्यों नहीं आया बंदा. So he's been one of my favorite commentators. Like he can just talk about chess and still make it interesting. That's a very rare skill. But yeah, I mean, really sad what happened. Was really, really, sub. I think everybody in the chess community was so shook. Like, even right now, you see people reacting on Twitter. Like, itne din ho gaye, but still they keep reacting. People still have not been digest that fact. मेरी रेटिंग 400 है। अरे भाई 400 इज अ गुड स्टार्ट यार। True, if Tikku never became commentator, he would have been Faridabad world champion. True, true, Shreyash bhai. That's तो चिकनी चमनी पर मैंने किया हुआ है actually चिकनी चमनी पर dance. That's the surprising part. So not gonna reveal any more about that. Moving on. What's the clutch chess day prize for first position? I think every win gets you certain amount of dollars. So it depends on the number of wins you have. Uh, if Gukesh loses, then I'm done with chess. नहीं नहीं भाई ऐसे मत करो यार। देखो गुकेश, आज खराब दिन हो भी सकता है तो कल अच्छा दिन आएगा। डोंट वरी भाई। आज नहीं तो कल जीत है, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी ना कभी जीत जरूर आएगी। You know what? Success is not just about hard work and luck. It's also about just being there for a long time. If Tikku never had today's last diff event, बिल्कुल साल में आपकी कितनी ओके भाई एक बनती वही बड़ी बात है। लैग हो रहा है। गुकेश इज गेटिंग क्रश इन ऑलमोस्ट एवरी इवेंट। डू यू अच्छा तो वी आर बैक ना। हाँ हाँ हाँ। ओके वी आर बैक चैट। कुछ हमारा सर्वर इशू था कुछ अपेरेंटली। जब भी समय भाई का नेट जाता है तो वो सर्वर इशू जाता है। अच्छा 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 अच्छा।
ऐसी जैसे जैसे कभी रील पे व्यू नहीं आते तो इट बिकम्स लाइक अभी चेस का ट्रेंड नहीं है एक्चुअली, तो मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ। 1K का क्यों है मत भूलना। भाई स्ट्रीम लाइक करो भाई, 1K लाइक्स पे होगा। अगर 1K लाइक होंगे तभी तभी करेंगे हम लोग। यू आर वेरी पॉजिटिव, आई लव दैट माइंडसेट ऑफ योर्स, द वे यू हैंडल। आई थिंक यार, भाई पता है मैंने एक चीज पढ़ी थी कि बचपन में, आई थिंक कि अगर आपको लोगों को हर किसी को इम्प्रेस करना है तो सेल आइसक्रीम। एंड उसके बाद मेरे को एक दोस्त मिला जिसको आइसक्रीम भी पसंद नहीं थी भाई। देन आई रियलाइज कि भाई यू कैन ओनली बी योरसेल्फ, एंड जिनको पसंद आया नहीं आया, जिनको नहीं आया बढ़िया, एंड यू विल हैव द राइट पीपल अराउंड यू। आई एम स्टक एट 650 येलो। भाई प्रखर के प्रवचन का फोन क्यों आ रहा है भाई? हाँ प्रखर भाई बोलो। आइसक्रीम बेचनी है, अच्छा भाई हाँ बोलो। लाइव भाई। यूएस में हो गए तो भाई फिर गोवा आना क्या पता, बहुत लंबी फ्लाइट तो, बट आ गए हो इंडिया तो आ जाओ भाई। क्या आपकी आवाज कट रही है प्रखर भाई? हेलो? हेलो? 3rd to 5th है ना? तो फिर ठीक है, नवंबर में है ना भाई, दिसंबर में है ना भाई, नवंबर है अभी। तो आ जाओ भाई, आ जाओ। मैं भाई मेरी खुद है उन दिनों पे, मेरी खुद है उन दिनों में भाई। उसकी वाह, वाह, वाह। अब मैं ये चैट को बोल भी नहीं सकता मैं चीज ये भाई, बढ़िया है, सारे वेडिंग हॉल एक साथ बुक होंगे। चलो मैं लाइव हूँ, बट भाई गोवा आना है, मैं बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, डन, 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 ओके, ओके। चलो भाई, वन मोर इन्फ्लुएंसर यू कैन मीट नाउ इन गोवा, दैट इज प्रखर के प्रवचन। सो इफ यू आर अ बिग फैन ऑफ पॉडकास्ट, सो यू कैन बी देयर। आना पड़ेगा भाई, बोल दिया भाई। प्रखर भाई का दिसंबर में बहुत बड़ा फंक्शन है, अपेरेंटली इज ग्रेजुएटिंग टू अच्छा आगे नहीं बोलूंगा। आर यू मैरिंग इन 1 मंथ? गॉड नोज एक महीने में कहाँ होंगे हम लोग यार, कहाँ होंगे इंडियन चेस प्लेयर्स एज वेल। सो मीनवाइल चैट इंतजार कर रहे हैं हम लोग, गुकेश वर्सेस हिकारू नाकामुरा। आई नो गुकेश की थोड़ी लगी पड़ी है, बट आई थिंक ही इज गोना स्ट्राइक बैक इन दिस मोमेंट। यही है वो मूव जहां पे हिकारू की रेटिंग गिरनी चालू होगी, गुकेश की बढ़नी। प्रखर भाई 1 मिनट रुक जाओ यार, अरे भाई 1 मिनट में काम नहीं करते प्रखर भाई। बढ़िया है टिक्कू भाई, अरे बड़ी अच्छा बधाई हो अच्छा। क्लैश साहिल भाई ऑन ऑन व्हाट? ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है यार, पता नहीं ब्लर दिख रहा है। ये मैच नहीं जीता तो मैं गया। भाई आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो भाई? स्ट्रेस तो रुकेश को लेना चाहिए। रुकेश माइनस 11.5, ओके पढ़ लिया। फाइंड आउट who's not that lucky। एक तो पता ना, मैं कमेंट्री इंग्लिश में करता हूं तो चैट भी इंग्लिश में लिखती है, बट कई बार इंग्लिश समझना चैट में मुश्किल हो जाता है भाई। आई नेवर रियलाइज दिस, आई एम जस्ट रियलाइजिंग दिस राइट नाउ। टाइम टू लीव द स्ट्रीम एज यू वोंट शो मैग्नस गेम नाउ। दिखाएंगे भाई, दिखाएंगे आफ्टर गुकेश गेम भाई। स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है भाई? अगर आपने 3 डेट्स देखी, आपको पता है स्टार्ट करने में पहले थोड़ा पेडल करना पड़ता है, थोड़ा मोमेंटम बिल्ड करना पड़ता है, तब जाके जब ग्रर आवाज निकलेगी तब जाके गेम चालू होगी। तो कम ऑन गुकेश, ओपन द चैट, स्पैम कर दो भाई लोग, एंड तभी गेम चालू होगी। डांस ऑन लॉन्ग, लॉन्ग क्या है भाई? टिक्कू भाई बैटरी गई नहीं? नहीं भाई मेरी बैटरी है, क्योंकि बैटरी मेरी बैटरी तो फुल है, मेरी गले की कम है बट मेरी फुल है। If Gukesh loses, then I will dance with what? भाई चैट तुम लोग भी थोड़े क्रेजी है भाई, एक बार खुद के लिए ताली बजा दो भाई, क्या अलग ही डायलॉग था। आई विल डांस विद स्ट्रे डॉग्स, वाओ। कुछ भी मतलब। If the situation was opposite in favor of Gukesh, then India would have declared holiday. You know what? That's true. That's actually true. I'm not even going to discount that. That would have been, I think हम अभी तो मेरे ट्विटर पे 1000 फॉलोअर बढ़ गए होते एक ही ट्वीट से। हैव यू प्लेड माइनक्राफ्ट?
एक सेकेंड, बैंक बैलेंस कितना है? जीरो। नहीं नहीं, आई हैव नॉट प्लेड माइनक्राफ्ट जस्ट येट। चेस में ही हम लोग भाई। इसका सीपीएम इज ओके, नॉट गोना क्राई राइट नाउ ऑन स्ट्रीम, सो गोना होल्ड माय ओन, गोना होल्ड फोर्ट। स्ट्रांग स्ट्रांग, बी स्ट्रांग टिकू। टिकू भाई, बैटरी ओके, ये नहीं होगा भाई। मैगी चाहिए मुझे भाई, सहाज गई मैगी गई, दोनों वर्ल्ड कप में ही आएंगे। ब्रो, आई एम न्यू हियर, वेलकम हर्षित भाई टू द स्ट्रीम, ग्लैड टू हैव यू। हर्षित नाम का मेरा एक दोस्त भी है, कमेंटेटर है वो। आप चैट में आ रहे हैं तो मैंने सुना है काफी कूल लोग होते हैं हर्षित नाम के। बाय द वे, डू यू बिलीव चैट की जो जिन लोगों के नाम सिमिलर होते हैं, दे हैव सिमिलर पर्सनालिटीज? आई जेन्युइनली फील सो। लाइक कि किसी का नाम फॉर एग्जाम्पल रोहन है या नेहा है या यू नो समय है, या लाइक दे आर सिमिलर इन नेचर, ऐसा मुझे फीलिंग आता है भाई। रुकेश, या तो पार्टी पार्टी देना पड़ेगा हमें, और हारा तुम दोगे क्या? पर तुम्हें देनी पड़ेगी ना। Gukesh is getting crushed in almost every event. Do you think he should stop participating in this? भाई, इंडिया में ऐसे लोग हैं जो 7 7 साल से यूपीएससी कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो आईआईटी के लिए ड्रॉप कर रहे हैं, लाइक, एंड सम ऑफ देम डू क्वालिफाई। लाइक, हार्डशिप डज नॉट मीन कि आप गिव अप कर दोगे भाई। दैट्स नॉट Gukesh's core, and that is not the core of any successful person. They will keep trying until they achieve their goal. That's just who they are. भाई गेम चालू क्यों? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक पहला अच्छा सवाल चैट भाई, कहाँ है भाई गेम? हनीमून पे कहाँ जा रहे हो? गुड क्वेश्चन। ओके, कुछ चीजें सीक्रेट रहनी चाहिए भाई। आपका फेवरेट सब्जेक्ट, ये प्रखर को बताऊंगा एक्चुअली, गुड पॉइंट। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है भाई? यार, आई एम टू ओल्ड टू डिसाइड सब्जेक्ट्स नाउ। जो जो स्कूल में पढ़ाई करी वो किसी काम तो आई नहीं। ये तो मैं अनपढ़ होकर भी कर सकता था, बट इट्स स्टिल गुड टू स्टडी वेल। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट नाउ, especially in the age of AI. Every Sahil doesn't have an irritating voice, bro. I know enough Sahils. They did have some irritating voice. Uh, Actually, I guess Magnus wants a shiny trophy to. Bhai, can you imagine कितनी trophies और medals होंगे Magnus के घर पे? I'm gonna guess like an entire hall is full of medals and like trophies and like show pieces जो उसको ऐसे दिए गए हैं for arriving in certain countries. Like it's crazy. Like उसके घर में एक कमरे का like अगर मैग्नस मुंबई में रहता तो वो 1 लाख रुपए रेंट तो सिर्फ अपनी ट्रॉफी रखने के लिए देता भाई। Like it's crazy. साहिल भाई, मैं लूडो चैंपियन हूं भाई, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता लूडो में भाई। देयर इज नो चांस। साहिल मैग्नस 1-0। एक्चुअली मैं खेला हूं मैग्नस से, क्यों विश्वास नहीं होता यार कि आप प्लेड मैग्नस कार्लसन। भाई चेसकॉम ओपी है भाई, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। भाई मैं मैग्नस के सामने बैठा था, उसने हाथ बढ़ाया ऐसे ऐसे करके, और हाथ में भाई, दैट मेमोरी इज इंग्रेन्ड इन माय हेड भाई, मेमोरी फॉर अ लाइफ टाइम। चेसकॉम ओपी भाई, बनता है भाई। गेम शुरू नहीं हुई, हिकारू के फेवर में है इवाल बार भाई, वाइट के फेवर में है, हिकारू के फेवर में नहीं। If Gukesh loses, I will say my feelings to my crush. लगता है अब सिंगल ही रहोगी चैट जी, फिर तो आज जीतने वाला है गुकेश हमारा। साहिल भाई, ईसीसी में बहुत अच्छा कहता गुकेश, ये लोग अच्छी चीज भूल जाते हैं। भाई ईसीसी स्ट्रीम नहीं हुआ ना, दैट्स द डिफरेंस। सो वही बात है, इफ अ ट्री फेल इन द फॉरेस्ट एंड नोबडी सॉ इट, देन डिड इट एक्चुअली फॉल? वो वही चीज है। अब एक बंदा चैट में आएगा, टिकू भाई तो गलती आपकी हुई ना, आपने स्ट्रीम नहीं किया आईसीसी, इट्स योर मिस्टेक टिकू। अभी एक बंदा आएगा चैट में, पता है मुझे। साहिल नाम का एक बंदा जेल में भी है, पुलिस वाला होगा इंस्पेक्टर। 200 IQ। बाय द वे, लुकिंग एट द स्टैंडिंग्स, मैग्नस कार्लसन लगता है अलग ही अपना टूर्नामेंट खेल रहे हैं 17.5 पे। सो तीन लोग बेचारे अपना खेल रहे हैं। So you want Magnus to now beat Fabi, and you want Gukesh to beat Hikaru. That's how you finish second, I think. That's the that's the easiest path forward.
गुकेश की क्लासिकल रेटिंग क्या है? आई थिंक इज वर्ल्ड नंबर 9 नाउ, 2763 समथिंग लाइक दैट. And the games have begun after 200 light years. एलियंस भी आ गए, गेम चालू नहीं होती, हाँ हो चुकी है चालू. D4 ऑन द बोर्ड. क्या होगा? हिकारू नाकामुरा क्या खेलेंगे? एक और निम्जो देखने को मिलेगा. बिल्कुल, दिस इज गुकेश फेवरेट ओपनिंग अगेंस्ट दिस स्ट्रक्चर. सेंटर में खेलते हैं, एंड ये ओपनिंग तो मैं भी खेलता हूं. फॉर द फर्स्ट टाइम आई कैन एक्चुअली ऑफर इंस्ट्रक्टिव एडवाइस भाई. यहाँ पे थोड़ा अब साज भाई बनते हैं. So I think यहाँ पे you can basically give up the bishop pair and you can now start taking the center as black. So आपको castle करने से पहले you wanna allow you wanna prevent white from castling. And Chiku bhai, I think यहाँ पे आपने कभी खेला है साज भाई. True. I have also played this. बिल्कुल, absolutely, I've played this. तो मुझे लगता है बिशप D3 यहाँ पे आएगा बहुत बढ़िया. एंड बाय द वे, कैसा मौसम है यहाँ पे यार? बुढ़ापे से बहुत ठंडी लग रही है मुझे भाई. लाइट ईयर्स डिस्टेंस की यूनिट होती है साहिल भाई. ये आइंस्टाइन के पोते को कौन लाया चैट ने भाई? कौन लाया इसको भाई? कौन से आया बंदा भाई? बाद में A5 खेल दिया है. नाइस मूव. द आइडिया इज टू प्रिवेंट B4. ठीक है, दैट वुड हैव डिफेंडेड द C5 पॉन. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो फिलहाल के लिए आई थिंक मैग्नस दिमाग से जाता नहीं है भाई. क्या बंदा है भाई, गोट जी निकले. सो नाइट E2 एंड नाइट C3 आई थिंक कुड बी अ नाइस मैन्यूवर हियर टू चैलेंज गुकेश इज नाइट ऑन E4. गुकेश का एक ही पीस डेवलप्ड है. एक्चुअली एक ही डेवलप्ड है, एंड इट्स वेरी एक्टिव. सो ये इट रिमाइंड्स सचिन इन द 90s, राइट? सो एक ही बंदा खेल रहा है. सो इसको आउट कर दिया अगर यहाँ पे हिकारू ने, तो सडनली उनके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे. नेवर टच योर गोल्डन कान. भाई सहाज भाई का कान क्या रेट में बिकेगा भाई? आई स्टिल हैव टू एडमायर लाइक योर गैम्बिट रियली वर्क्स. Gukesh is hyped. No match for Prime, Hikaru and Fabi. कह रहे हैं कॉमेडी की वाइन्स 4 7 8 9. साले मेरे कोच बनोगे. भाई मुझसे कोचिंग लोगे तो मतलब इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे यार? कोई अच्छे अच्छे कोच के पास जाओ, मतलब ऐसे थोड़ी यार. Gukesh had a good day one. Unfortunately, day one is this in this format. Exactly, day three is the best. If you crush day three, day one, day two doesn't even matter. Yeah, imagine you had 0 points and you win everything on day three. You get to 18 points. So day three is just the most relevant. So that's why I feel Gukesh still has a chance here. By the way, suddenly after Queen C2 A5, Mara, Gukesh has an isolated pawn. सो ये पॉन कमजोर है. अगर आप व्हाइट को अलाउ करोगे आराम से पीस डेवलप करने के लिए. बाय द वे, काउंट द नंबर ऑफ पॉन्स. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. ऐसा क्यों? पोजीशन इक्वल क्यों है इवन दो व्हाइट हैज एन एक्स्ट्रा पॉन? द आइडिया इज कि व्हाइट कैसलिंग नहीं करा है, अभी 3 चाल दूर है. जितने टाइम में व्हाइट कैसलिंग करेगा उतने में ब्लैक विल विन बैक दिस पॉन and develop some pieces. So that is the idea. Accuracy wise, Gukesh 100% accuracy पे खेल रहे हैं. So he's playing very well, but of course so is Hikaru. So I think what you really want is to blow up the center. अभी possible नहीं है. So the least you can do is win back this pawn and try to create some initiative. बहुत जरूरी है, because long term white has the bishop pair. White has a better pawn structure and Gukesh will suffer. So कुछ तो creative करना पड़ेगा यहाँ पे. बाय द वे, भाई साज भाई आपके किचन में से मैगी खा रहे हैं. भाई बता रहा हूँ, मैं घर शिफ्ट किया है अभी. तो मेरे यहाँ पे एसी कहीं नहीं लगे, तो किचन में भी बहुत गर्मी होती है. तो साज भाई, इफ ही हैज द डेडिकेशन टू कुक राइट नाउ इन माय किचन इन दैट हॉट टेम्परेचर एंड ईट इट, भाई फुल पावर टू हिम. कर लो भाई. बाय द वे, 96 प्लेड, ये प्यादा उनको चाहिए. बट चैट, रुको. लुक एट द टाइम. इट्स अ 3 minute edge for the world champion right now. You have to admit Gukesh is way ahead. I mean, that's a big deal, right? That's a big deal.
3 minutes is a lot of time. You have to admit Gukesh is the favorite right now, purely on the clock. Come on, Gukesh, you can do this. You can do this, Gukesh. Time advantage nahi khona. By the way, time advantage बढ़ता हुआ 3.5 minutes now. Gukesh should appoint Tikku as coach. Definitely. Definitely, I think. That's a good suggestion. Salary में कम से कम 50-0. Oh, by the way, knight d4 played. Oh, I is he planning f3? Is that a potential plan? I mean, sometimes I feel कि सहज भाई आए नहीं तो we are missing him, but then I feel कि सहज भाई तो like रो पड़ते हैं स्ट्रीम पे, like we would watch a commentator cry for the first time. एफ पॉन की कोई इज्जत ही नहीं है इस टूर्नामेंट में, हर कोई फेंके जा रहा है. Okay, 9.5 minutes. Now we have to take this pawn. I think that's pretty obvious. Other options could be bishop d7. You could say कि ये pawn तो मरना ही है, इसको बाद में मारूंगा. You could also try moves like a4. And that's very interesting. आप basically यहाँ पे b3 square अपने knight को दे रहे हो. And if queen a4, then you can create some, discover attacks long term. For example, bishop d7, knight c5. And again, you're kind of playing against white's castling. You're developing pieces with a tempo, and you gain that extra move that white was using to castle. So ideas बहुत हैं, but कौन सा use करें, Gukesh, is an important deal, but he has to do it quickly. Where do you live? I live in पनवेल अभी यार. टाइम का बोल के नजर लगा दी भाई. अगर मेरे बोलने से नजर लग जाए तो कैसे रहेंगे वर्ल्ड चैंपियन? Come on, come on, come on, Gukesh, you have to play now. Don't lose that edge. As the world champion, this is the final day. Gukesh will be flying to Goa just, I think, after this game. And iska matlab ki whatever happens today, it's going to be in his mind as he takes that long flight. So this has to be a good day for Gukesh. Last time, grand chess tour में जो Zagreb में हुआ था, he got destroyed on the last day. I think he scored he had 6 or 7 losses in a row, had 1.5 out of 9. You want to avoid that today at all cost. Bishop d7 played, by the way. I think he's keeping the option open of also taking with the rook potentially. Of course, he'll likely take with a knight, but at least that's an option now. Any chance of Gukesh to be first? Second to आराम से आ सकते हैं, as long as he keeps winning. Second is not difficult. First is, I think, close to impossible now though. Bishop d3 played, and chat, look at this. एक move दूर castling से white. एक move दूर. So Gukesh has to do something now. Either he takes on c5, gets the strong bishop pair. Either he plays queen g5. Okay, bishop pair le liya. That's also a good deal. And now look at this. Only move the Hikaru ki, by the way. Oh, that's how close he came to losing that game. And now it's roughly balanced. Come on, come on, come on. चैट, डे 1 को हम साथ में वाइव कर रहे थे, बहुत मजा आ रहा था. You were enjoying because Gukesh was doing well. I want that vibe again. Gukesh, it's a moment for you to give an Indian fans, a moment to cherish for the next 3 days as we wait for the World Cup to begin. Let's put in our best. You have the ability to do so. Hikaru Nakamura is somebody who's been playing some state tournaments recently. He's not had time to maybe practice. No, maybe he's not had the toughest competition in his recent games. Let's put pressure on him. Queen b6, great move. Trying to bring the rook to c8 to attack the white queen. Chat, by the way, let's not forget 1K likes पे diamond membership आपके लिए आ रही है. Let's get to 1K likes quickly. वो दिख रहा है 700-800 हो चुके हैं. जल्दी से 1000 लाइक कर दो भाई लोग. साथ में लाइक बटन दबाओ और लोगों को लाते हैं. Let's watch Gukesh crush Hikaru. So coach Hikaru went. Yeah, he did go there actually. True. जल्दी कर, सुबह पनवेल निकलना है. मैं रात को ऑलरेडी निकल गया, ऑलरेडी हियर भाई. Gukesh World Cup, who will qualify candidates? Gukesh World Cup, then the 4th spot, जो 4th आएंगे उनको मिलेगा वो
तीसरा तीसरा स्पॉट, अगर वो भी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके होंगे, फॉर एग्जाम्पल अनीश क्वालिफाइज, who's already qualified, or maybe Bluga Matthias, in that case then Arjun might qualify from the 2024 circuit. So Arjun का एक हल्का फुल्का सा वो एक चांस है, but okay, that's very unlikely. Is it live? It is live by, absolutely live. This is first game case today. Nahi bhai. Yes, it is the first game. Yeah, first game. अभी चालू हुई है stream. बस 5 मिनट हुए चालू है. First game for Gukesh today, and he's playing. मैं इसका गेम skip कर दिया Gukesh ने. He press skip, swipe right left के बदले skip कर दिया उसने. So yeah, first game today. By the way, B3 played. Nice move, preventing A4 from black. And now Rook C8 is pretty obvious. The question is, where do you put the queen? Because एक बार आपने B3 खेल दिया, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीकनेस है. चैट, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लेइंग B3? कौन बताएगा द प्रॉब्लम ऑफ प्लेइंग B3? Adiman, I know you're watching, bhai. Sorry, bhai. Are viral images of Mumbai AQI really true? I am not in Mumbai exactly. Panvel थोड़ा दूर है, so very hard to be sure. It is a C3 square. Very well said. I can see Saurabh, Sarabjot, Smartware Insights, Yuvraj. Yeah, it's a C3 square. Kal ko ye knight, and even the rook can occupy that square. So to be honest, I mean, Gukesh is doing very well. Like, okay, he's not better as such because he isolated pawn hai, but he's doing well in this position right now. Time pay, look at the clock, 3 minutes ahead. So if you had to choose a favorite right now, it would be Gukesh. Come on, chat, let's go. Gukesh bhai, kuch pressure dalo. Maybe rooks. Can we play rook c7? I was thinking if queen g6. Ooh, switch कर दिया है भाई. Suddenly queen side से सीधा king side पे attack, and now bishop h3 is incoming. हिकारू ने देखा नहीं होगा भाई ये. Nice move. I like that move actually. It's unexpected. And now Hikaru, who's in time pressure, has to think, plays f3. Sajbhai, sorry, bro. And now knight c5, knight d3 incoming as well. e3 also a weakness. White की best move, queen b1 है. Not easy to find, first of all. I think Gukesh धीरे धीरे squeeze कर रहे हैं यहाँ पे. Yup. He's squeezing the orange and the juice is dripping out. I think orange juice banega. I think Hikaru has to find some great moves in time pressure. That's not going to be easy. Do you think Indian chess fans are most naime? But I think Indian chess fans are most passionate. ऐसे passionate fans कहीं नहीं मिलेंगे आपको. But I do think कई बार लोग एक्सटेंड कर लेते. ट्विटर में देखे कई ट्वीट्स कि हिकारू ने फेंका किंग, ध्यान से देखिए, डिसरिस्पेक्ट. मतलब इतना क्रेजी कुछ था नहीं वो. मतलब इट वाज लेस, नॉट एज क्रेजी, बट या, Indian fans are very passionate. By the way, a4 played, and b4, by the way, if you had played b4 here, knight b3 wins on the spot. It's winning because knight takes b3, I 8 takes b3, and suddenly why pass pawn ban raha hai. So Hikaru had to take, and suddenly now Gukesh is better. Why? It was not disrespectful by, because it was pre-planned. Like all the players knew it. At least that's what I know. Is it mandatory to join the academy to enroll for tournaments? Not really. You can play on your own. AISF.in पे जाओ, register करो, खेलो. Rook c4, Rook c2 का plan हो सकता है. Right now the knight defends, but now we have knight e6 ideas to remove that strong knight. The only problem is कि यहाँ पे opposite color bishop है. That means कि draw के chances हमेशा रहेंगे. So Gukesh has to keep that in mind as he exchanges pieces. He has to be very careful कि कौन से piece में exchange करता हूं. Otherwise, it might just lead to a draw. Ooh, bishop b4. You can already play knight d3. You can also play. Played best move. And now the best move for Hikaru is king h1. What?
Okay, king h1 makes no sense to me. ये क्या चाल है भाई? What is king h1? There's no way he finds it, yeah? There is no way he finds king h1. Come on, Gukesh, you can do this. You can do this. रात के 12 बज चुके हैं. गुकेश जी रात को थोड़ी सी उम्मीद देते हुए हम लोगों को हिकारू भाई के पास 2 मिनट से कम है. ओ माय गॉड, गुकेश इज सो फार अहेड नाउ. गोल्डन अपॉर्चुनिटी. चैट स्ट्रीम लाइक करो. दिस इज द मोमेंट वी बीन वेटिंग फॉर. कम ऑन गुकेश, दिस इज द मोमेंट. अरे भाई सेलिब्रेट भी नहीं करें क्या उत्कर्ष भाई? इतनी मात्राएं क्यों हैं आपके नाम में? Hikaru Nakamura finds the best move. Wow. You have to admire that move, but it took a lot of time though. Time बहुत कम है हिकारू के पास अभी भी. Now what do we do? As Gukesh, I will just play h6, give the move back to Hikaru here, let him waste time. It's all about the clock now. Hikaru will make a mistake if the game is gonna last long enough. World number 2 for a reason, absolutely. What you want to avoid is an opposite color bishop endgame. You want to keep the game complicated ताकि हिकारू गलती करने का मौका मिले. Okay, he's still thinking. He's still thinking. Come on, come on. गुकेश भाई ऐसा मत करो हमारे साथ. हमारी फीलिंग्स के साथ मत खेलो. Okay, still no moves. Okay, chat. I think Gukesh is possibly considering. First of all, do you want to take on b4? That's the obvious move, right? A takes b4, rook takes b4, you win a pawn. But the problem is the knight on d4 is now untouchable. You can never attack it using any of your pieces, period. So I think that's the problem. That's why he doesn't take it. He plays bishop a4. I like that move. Not simplifying the position for Hikaru, keeping it complicated, controlling that c2 square. Very important. I think he should think for some time at least to play good moves now. He is thinking. He did use 1 minute and 19 seconds. So he's using enough time. And Hikaru dropping below that 1 minute mark. You know, as a player, I might not have played at the top level, but I've played some tough games. And जब भी वो seconds में clock जाती है ना, you start to panic regardless of who you are. F4 सहज भाई माफ करना भाई. आज सहज भाई को torture करने के mood से आए हैं हिकारू नाकामुरा. F pawn push कर रहे हैं. He's trying to create counterplay, which I don't think exists. Hikaru is overextending, I feel. This might backfire. Queen e4 played, using that square for the queen. Excellent move by Hikaru. Sorry, by Gukesh. Now the best move Hikaru is queen g4, attacking that rook, attacking g7, hoping for queen g4, knight f5. But that requires guts. He's not able to find it. And now Gukesh can even just take, actually. Because endgame is better for him. He has the rooks already dominating the c file. So queen f3 will be very logical, actually. Come on, come on, come on, chat. Like, chat, come on. Hazar like, jaldi se like kar do stream. Let's go. गुकेश 4 मिनट आ गए. अब तो जीतना पड़ेगा भाई. अब तो जीतना पड़ेगा. Okay, you could play at 6 again. That's a normal move. You just want to pass time. Okay, he takes. Now, pawn takes, double pawn हो जाएगा. And the second rank is now weak. So, एक बार रुक second rank पे आ गए किसी तरीके से, it would be game over. The problem is though, now the knight has no squares to go to. So, most likely आपको शायद मारना पड़ेगा and you might go into the end game जहां पे knight against bishop है. And I'm not sure it's completely winning even a pawn up for Gukesh. So थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा अभी भी. Luckily he has time. See how the time makes a huge difference. Yeah, no pre-move here. But Hikaru might have to, play very quickly regardless.
Come on, come on. Come on, Kokesh. What does he play now? In fact, I love one plan. H5, H4, H3 भी खेल सकते हो. Push that pawn all the way. ताकि जब भी रुक 7th rank पे, 2nd rank पे आए, it could just be checkmate. I love that plan for Kokesh. That's a beautiful plan. G pawn यहाँ आया. H3 square available है. Let's use it. By the way, good question. Why not knight f4? अगर मैं ये मारूंगा तो ये मार दिया. But the problem is, first of all, even this is an opposite color bishop endgame, but this is winning. But the problem is knight f5. Suddenly knight hanging and knight e7 fork. समझ रहे हो? This is risky. And if knight g6, then knight d6, and you are basically worse. So bishop d7 खेला Gukesh ने. आता है यहाँ f5. Knight takes before मारते हैं. He takes the pawn. And now the question is this enough to win the game? I'm not sure. I think Hikaru does have compensation for one pawn. Takes, and if takes. Good question. I think if takes, then you take, and takes, and then take. And that should solve the problem. By the way, now pawn up again. Is it enough? Rook b8 पे chat. क्या खेलोगे as white? Hikaru को क्या खेलना चाहिए? What is white's best move? Come on, chat. Guess it right now. The best move is rook b6, not allowing the pawn to move forward. So क्या करेंगे गुकेश यहाँ पे? Exactly, rook b6 is the best move. टाइम डिफरेंस कम होता हुआ जीतना आसान नहीं होगा यहां पे. rook c7 खेल सकते हो, but then again, how are you improving the position? There is no way to improve at all. Tough moment for Gukesh. He's better, but it's not enough to win. White's better तो नहीं है. I disagree. White could draw चाहिए तो he could just play b5. Knight b5, bishop f5, and it's a pawn up, at least a draw. Knight d6 looks deadly, but there's bishop b1. तो भूलना नहीं. बाद में rook b8. Oh, he does play rook b8, and now rook b6 has to be played by Hikaru. अगर rook b6 नहीं खेला, Gukesh is again close to winning. Oh, finds it. Now it's about king e7, king d8, king d6. अगर Gukesh ये खेल पाते हैं, he's back in the game. It's just about pushing that b pawn, chat. B pawn को एक बार push करना है. जितना वो आगे बढ़ेगा उतने चांसेस बढ़ते जाएंगे विन के लिए. किंग e7, लेट्स गो. आ रहा है भाई. Oh, nice move by Hikaru, sacking another pawn. जैसे किंग b8 खेलोगे, I will take and win 2-3 pawns here. Oof, nice. But okay, still the game goes on, yeah. Gukesh will not agree to a draw, I think, instantly, because time पे भी आगे है. And time पे जब कम होते हो ना, कुछ भी हो सकता है, chat. Let's not lose hope for a win here. By the way, Carlsen Caruana also looking like a draw right now. So let's check to this. H5, okay, H4. रोक दिया दोनों ने pawn एक दूसरे का. आगे क्या? And H5 move important है, पता है क्यों? जब भी ये king हिलेगा, मारने के बाद f7 मारने के बाद h7 एक ही चाल में हैंगिंग था. अब उसमें एक एक्स्ट्रा चाल लगेगी. देख रहे हो कितना डीप आइडिया है? इट्स वेरी डीप. इतना डीप तुम कभी घुसी है चेस के अंदर भाई. यू कैन नॉट गो सो डीप. इतना डीप जाते हैं प्लेयर्स. 10, 15, 20, 30 मूव आगे. दे कैन कैलकुलेट टिल द एंड ऑफ द गेम. केज का टाइम भी कम होता हुआ. नाउ इट्स लुकिंग लाइक इट्स मोर डिफिकल्ट टू विन दिस गेम. King जैसे यहां आएगा, I think Hikaru will grab this pawn and it's going to be a draw. Come on, Gukesh. Any last try which can put a little bit of pressure on Hikaru? At least गलती करने का मौका मिले बस. नहीं, Hikaru, I don't think Hikaru can win this one. There's no chance. It's only a 2-result position. Either Gukesh draws or he wins. But draw is very likely. Pawn f5 possible है. But then king g3, king f4 maybe. And I will win that pawn on f5 for free, regardless.
स्टिल थिंकिंग गुकेश, नाउ टाइम कम है उनके पास भाई, सडनली टाइम पूरा उल्टा हो चुका है। आई होप ही डजंट ब्लंडर नाउ। बी केयरफुल गुकेश, टाइम कैन मेक यू डू सिली थिंग्स समटाइम्स। 19 सेकेंड, चल भाई, चल क्यों नहीं रहा है? 14, 13, 12, 10। आई एम सॉरी, व्हाट? Why did he sack the pawn? Only white can be better here, right? Okay, I'm not sure what just happened. If he wanted to draw, he could have taken it without sacking the pawn. I think he's trying to get to the H pawn and push that one, but that's not going to happen, I think. That's just not going to happen. Yeah, I think that's miscalculation a little bit there, but okay. Hikaru also under time pressure might make a mistake. Who knows? Yeah, they are repeating now, so maybe a draw. Will Hikaru now push? He could do so. He could do so. भाई come on, Hikaru भाई थोड़ी oh, Hikaru playing for a win. Hikaru Nakamura now saying no draw Gukesh, खेलो भाई साहब। नेम ऑफ होस्ट, वेलकम नील भाई। साहिल तिक्को है नाम, नाम तो बिल्कुल नहीं सुना होगा। कम ऑन लेट्स गो। 6 सेकंड, 5 सेकंड। ओ हिकारू इज नाउ बेटर, हिकारू इज नाउ बेटर, आई एम पैनिकिंग नाउ। Gukesh should have taken the draw, now he's slightly worse. The h5 pawn is falling. Okay, king f2 knight h5 क्यों नहीं हो सकता? Okay, maybe rook h1. Okay, still holding, still holding. Okay, king e5 is mate, I think. Or fork था, not mate, fork था। king f2 rook h1 has to be played now. ओके, 7 सेकेंड। हिकारू की गलती करने के चांसेस बहुत कम। रुक h4, नाइट f6। या इट्स गोना बी अ ड्रॉ नाउ, आई थिंक। अब ड्रॉ है, अब ड्रॉ है। अब Gukesh is out of the woods now, I think. Now it's a draw. Okay, what happens on e4? Okay, if Hikaru takes, he's going for a draw. If he, yeah, he's going for a draw now. Okay, now it's a draw. Okay, only move, but enough. Okay, now we can just take. Actually, yeah, it's done. Yeah, it's gonna be a draw. So पहली गेम होती है ड्रॉ ब्लैक पीसी से। नॉट अ बैड रिजल्ट ओवरऑल, बट शायद कुछ चांसेस थे वहां पे जीतने के लिए। एंड अगली गेम चालू होगी एग्जैक्टली 4 मिनट में। सो एज दे एंड इन अ ड्रॉ, लेट्स हैव अ लुक एट द मैग्नस गेम नाउ, मे बी, या because Magnus Carlsen is crushing Hikaru Nakamura, and he's gonna go to 20 and a half points. Sorry, crushing Caruana 20 and a half points now. भाई अलग ही लेवल पे है बंदा। वाओ। भाई nobody can reach first place now. It's just not gonna happen. Magnus just doing good things. Yeah, b7 wins actually. Rook c7 check wins. King b5 लुसेना में जा सकते हैं। Everything wins actually. वाह, लगे यार मैग्नस। ओजी shows why he's the goat। यार मतलब I'm sure Magnus has a weakness maybe somewhere. Like maybe some parts of his skills are not as good as the other parts, but वो कोई decipher कर ही नहीं पा रहा है। And regardless, that's the end of the game. So Magnus Carlsen also wins, and he now goes to 20 and a half points. मुझे लगता है मैग्नस 30 पॉइंट पे होगा, और बाकी लोग डबल डिजिट जाने के लिए तरस रहे होंगे भाई। पानी पीने के लिए है नहीं, कई लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं भाई। यही हो रहा है भाई इस टूर्नामेंट में। एंड नाउ सेकंड गेम, गुकेश वर्सेस हिकारू, वाइट पीसेस। ये गेम जीतनी पड़ेगी भाई। दिस इज द मोमेंट ही कैन गेट टू सेकंड प्लेस। 29.5 मैक्सिमम।
ओह नो, आधा पॉइंट रह जाएगा भाई। आई थिंक विल राउंड इट ऑफ टू 30। इतने हम बेदर्द नहीं है। मुकेश प्लीज सेव सेकंड प्लेस, या सेकंड प्लेस वुड बी ऑसम, बट उसके लिए ये गेम जीतना जरूरी है। नाउ किस द व्हाइट पीसेस, लेट्स होप सो ही कैन गेन सम मोमेंटम नाउ। द गेम स्टार्ट्स इन 2 minutes। लुसिना लुसिना आई पंच लाइक अ ब्रूस ली। भाई क्या मस्त गाना था भाई, मस्त था वो, मस्त रैप था। um मोस्ट क्लच चेस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, इंडीड विक्स की गोली खा लो। भाई यार वो अब आखिरी स्ट्रीम है अकेली, फिर गला अपने आप ठीक हो ही जाएगा, विक्स तो खा ही रहे हैं। Bronze place, everyone battles for second place only. If you look at any community post by Chesscom, India or Chesscom whatever, या whatever, हर बार ना कोई आता है, ओके ये टूर्नामेंट होने वाला है, टॉप प्लेयर्स आर मैग्नस, हिकारू, फैबी, गुकेश, अर्जुन, पराग, ठीक है। टॉप कमेंट हमेशा होता है, congrats to Magnus Carlsen for winning speed chess championship number 9। मतलब everybody knows like he's the clear favorite and he does it every single time, it's insane। Why not plug in the list? एक्चुअली जब ये टूर्नामेंट अनाउंस हुआ था, वर्ल्ड के टॉप 4 प्लेयर खेलने वाले थे। उस टाइम पे गुकेश वर्ल्ड नंबर 4 थे, सो आई थिंक इट्स प्रीटी फेयर। हेल्प यार टिक्कू भाई, अरे मैं क्या हेल्प करूं भाई, क्या हेल्प चाहिए। गुकेश कैन बीट इन डायनामिक पोजीशन, बट आती नहीं डायनामिक पोजीशन उतनी फ्रीक्वेंटली। यार डायनामिक में भी मैग्नस इज गोट भाई। एक एक गेम थी मैग्नस अगेंस्ट ली चाओ, आई थिंक 2000, आई थिंक कतार मास्टर्स की 2013 था या 2020 क्या था, मुझे याद नहीं है। दैट वाज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स ऑफ ऑल टाइम, व्हाट अ गेम बाय मैग्नस। मैग्नस ने यहां अटैक लगाया हुआ है, ली चाओ ने यहां अटैक लगाया हुआ है, एंड मैग्नस सैक्स द क्वीन टू फिनिश ऑफ अ ब्यूटीफुल अटैक। उफ क्या गेम थी भाई वो। सो मैग्नस इज वेरी गुड एट डायनामिक चेस आल्सो भाई, लेट्स नॉट काइंड ऑफ डिस्काउंट दैट। Yeah, that was crazy actually, 2022 speed chess championship। उफ कितने व्हाट्सएप मैसेज है भाई, सब पढ़ूंगा आफ्टर द स्ट्रीम। साहिल विल बी रेडी टू बी क्रश बाय मैग्नस चाइल्ड व्हेन 7 years old। 7 की भाई, 5 साल में भी रेडी हम लोग। टेक इट एक्चुअली इन दिस करंट पोजीशन बिकॉज अभी तो 4th प्लेस में है। सेकंड साउंड्स गुड। लेट्स गो पॉन टू E4। व्हाट्स गोना हैपन नाउ चैट, देखते हैं क्या होगा। बाय द वे कुछ वार्निंग आ रही है समय भाई, प्लीज कॉन्फ़िगर बोथ प्राइमरी एंड बैकअप स्ट्रीम। यहां पे ड्रॉ अगर चाहिए, बाय द वे नाइट D4 क्वीन B6 इज अ रेपिटेशन। So Gukesh had a draw. He said no to the draw. He's going for the win. Let's go. कम से कम 10 पॉइंट्स तो भाई, 10 पॉइंट तो हो ही जाएंगे इजिली। एक विन में 13 11 हो जाएंगे यार। अब बोलते हैं आर्म रेसलिंग में प्रोफेशनल हो आप। आर्म रेसलिंग तो नहीं, बट रिवील नहीं कर सकते यार, रिवील नहीं कर सकते, रुक जाओ वेट करो। टिकू बीटिंग मैग्नस, नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं, काम नहीं करता मैं। बाय द वे बिशप H6, लेट्स गो, ट्राई टू अटैक द किंग, मे बी ऑलवेज अ गुड गुड मूव। Matt doesn't feel bored because he's always winning. Bro, I mean, you can get tired of winning as well. Like if you have the cheat codes to a game, for example, yeah, मतलब imagine करो कि क्रिकेट गेम है या फिर वो GTA 5 है या whatever, you have some cheat codes, you can get any amount of money, any money तो नहीं but whatever. Uh, तो it makes the experience somehow less satisfying. Carlsen is so strong कि just him playing a event is like a cheat code. By the mar के suddenly Hikaru cannot castle. So things looking great for Gukesh now. Black की castling रोक दी है उन्होंने. He can castle pretty safely. Hikaru Nakamura under a lot of pressure. Let's go. Come on, brother. Let's go. Some pressure building up on the world number 2.
भाई नाम ले लो, हेलो सुबर्णा कैसे हो? गुकेश लेफ्ट 8.5 पॉइंट्स राइट, नो ड्रॉ के लिए 1 पॉइंट ही मिलेगा, दे वांट इंसेंटिवाइज विंस आई थिंक. एंड बाय द वे गुकेश इज स्टिल थिंकिंग. I would say let's play bishop e2, let's castle and put the pressure back on Hikaru. चैट ध्यान रखो, अगर ओके जीतते हैं 3 पॉइंट मिलेंगे एंड हिकारू को ही हराएंगे तो ही विल गो टू 11 एंड वेरी लाइकली फैबी माइट लूज टू कार्लसन, सो एंड देन ही प्लेस फैबी, सो वेरी इजी पार्ट टू सेकंड प्लेस राइट नाउ. Ooh. भाई डिफरेंट एंगल से देख रहा हूं कि किसी एंगल से ये मूव अच्छी लगे बट लग नहीं रही. ये क्या है भाई? Because I thought the main advantage we had was that we have prevented black from castling. So queen e3 back. I mean, the idea is to play knight d4 after a4. I get it, but okay, I'm not convinced by that move. A4. Now I'm even more confused. Why queen e3? That doesn't make sense to me. Was he worried about some rook g8, g5, trapping the queen? But that feels too far-fetched somehow. Yeah, I think Gukesh kind of saw some ghosts in the position. Like, I think he should have kept the queen on h6 for sure. And the bar agrees, and it's not a surprise. How many famous personalities are from DPS Faridabad? So I know ki Carrie Minati is from DPS Faridabad. That's enough, I think, if you want to count famous personalities. Then I think Prakhar bhi hai, and I'm sure there are multiple people who are doing big things. Because, famous personalities is not limited to creators. So there are multiple people. 5-1 back to back against Magnus yesterday was the surprise tournament. Otherwise, it is what it is. And उसके बाद भी मैग्नस इतना आगे है. Just imagine अगर वो नहीं हुआ होता तो. अर्पित पाला भी वहां का है क्या? I don't know about that by the way. But Bishop P2, let's castle now. अब कैसलिंग तो स्पॉइल कर नहीं पाए, कम से कम खुद तो कर ले. Come on, Bishop P2 castles, Gukesh. Let's go quickly. Time pressure build करना है. मैगी को बोलो हारे. बोलता हूँ. व्हाट्सएप कॉल करता हूँ इसको, अभी करता हूँ व्हाट्सएप कॉल को. Mukesh is just a kid who got lucky. Why is he so hyped? Prag is way better. Yeah, you can always have your favorites. जैसे पेरेंट्स के अगर 3 बच्चे हो तो कई बार एक फेवरेट होता है थोड़ा बहुत. But all three have potential. To lift somebody, you don't need to bring somebody down. I think that's the only thing I'll say. Queen c5, by the way, nice move by Hikaru, offering a queen trade because the white queen was so active. That is a nice maneuver. And अगर मारते हो pawn takes, Hikaru को d4 square भी मिलेगा. So Hikaru Nakamura slowly but surely equalizing this. Ooh, f4. Nice move. Before black and stabilize, trying to go for e5. Gukesh still in it. Still in it. Nice move f4. Love it. Endgame में push करने की knight d5 also next, threatening knight c7 fork. Come on, okay, still some hope, still some hope. देखो कार्लसन इंडियन प्लेयर से हारता है तो आपको सिल्वर इंडिया को बहुत व्यूज आते हैं. यार इट्स नॉट अबाउट व्यूज, आई थिंक इट्स द ऑपोजिट. आई थिंक anybody, any commentator you see who has who does well to any extent, be it anybody who will be at the World Cup, चाहे वो सागर भाई हो, तानिया हो, मियन सहाज हो या हर्षिता नम्रता हो, you have to really enjoy the players doing well. If you are in that zone ना कि भाई competitive है, I don't like this player, your commentary will never be nice. So I think वो genuine feeling है जो दिखती है कि players का अच्छा करने के लिए, वो दिखता है तभी आता है भाई.
By the way, chat, knight d4 played, so knight c2 before we could threaten the fork. Black is doing so. So maybe king f2 now. Bishop d1 एक चाल है, but I don't want to play bishop d1. Maybe king f2 is the best. Maybe king f2 is the best. Just sidestepping this fork. Okay, सोच रहे हैं. Important moment actually to think. So okay to use some time here. He could castle queenside, but also possible. Rook c1 makes no sense. I mean, because rook is on kind of a closed file, so rook c1 मैं नहीं खेलना चाहूंगा यहाँ पे. I would rather directly move it to some other file. Bishop d3, by the way, feels like the most ambitious move. That is also possible. But castling के बाद ना कभी rook d8 आएगा and this will be hanging. That's my worry actually. So bishop d3 also possible, but it's not the best move in the position. And इसको दोबारा चलना पड़ेगा आपको. By the king f2, nice move by Gukesh. Calculated really well there to find the best move. And now if knight c2, now I can move the rook somewhere, like rook a c1, rook a d1, and so on. Who do you prefer among Gukesh, Prag, and Arjun? I like all three. It's very hard to choose, but I think 2024 was Gukesh's year. 2025 is Prag's year. So will 2026 be Arjun's year? Only time will tell. I think 2024 was Arjun's year as well. Yeah, you cannot discount him. Like what an insane year he had. But it was a world champion Gukesh ban gaya. Otherwise, he also had a crazy year. आपको क्या लगता है यंग गैरी वर्सेस मैगी में कौन बेटर है? I think Magnus better by 1%, but not by much. He was born later, had more access to engines, better opening theory, and better endgames, I have to admit. So I'm going to say Magnus there. Who is better in rapid? I think it's probably Arjun. Any rapid blitz over the board, I'm going to pick Arjun there. Just heard about Dania. Why is nobody talking about it? The entire chess world was talking about it for days, Saksham. And everybody was so shook, like they couldn't believe it. Ki kya ho gaya? And we all knew he was suffering in one way or the other. But itna, like, we didn't know. And we don't know the reason of why it happened, but it was very sad indeed. By the way, in the game, Bishop d7 has been played. So e5 was our plan. Let's execute it. Let's not wait for black to kind of counter it. 2024 was Carlsen's year. He won 11 tournaments in a row. जब भी हम चेस में बात करते हैं ना भाई कुछ भी, हम कार्लसन को अलग लेके चलते हैं कि कार्लसन अलग अलग बोट में बैठा हुआ है. हम बाकी सब लोगों में डिस्कशन करते हैं. कार्लसन अलग है भाई. वी विल नॉट गोना कंपेयर प्लेयर्स टू कार्लसन जस्ट येट. कोई ऐसा आया ही नहीं अब तक आसपास भी. ओके, बाय द वे टाइम पे फिर से गुकेश आ गए. तो हिकारू से टाइम पे आगे रहना आसान नहीं है. कैन ही यूज दैट टाइम इन दिस गेम? पिछली गेम में तो इस्तेमाल नहीं कर पाए. क्या इस बार कर पाएंगे? मैच इज वन पंच मैन ऑफ चेस हु इज बोर्ड ऑफ विनिंग. And still he keeps winning. Why? Still he keeps doing it. Every single game, every single match, every single tournament, every single year. Any idea about FIDE World Cup tickets? Tickets are out, by the way. You'll find the link in the pinned comment. You can get tickets for the first two rounds now. So you are free to book those tickets. कर दो book. I'm telling you, अगर इंडियन प्लेयर अच्छा खेलने लग गए तो फिर इंस्टेंटली बुक हो जाएंगी. स्पेशली गोवा. गोवा में हो रहा है भाई. एनी सिटी यू माइट हैव टाइम, गोवा में बुक कर लो. बाय द वे, बिग मिस्टेक बाय हिकारू नाकामुरा. फिशर टाइप मूव के लिए knight h5, but that is a mistake. Just take that knight. Just take that knight. I think it's not completely clear because मारने के बाद ये pawn h4 आएगा. Rook g8, rook g3 are ideas, but I think it's the pros outweigh the cons. Take that knight, Gukesh. Come on. Come on, Gukesh. Come on. Also, at the gold key debate, let's keep in mind Kasparov never played World Rapid and Blitz. There was no World Rapid and Blitz then. It was not as common. So, in terms of the GOAT, Magnus has more evidence.
Yes, let's go. 94, best move. Attacking that pawn on c5. ये घोड़ा यहां जाएगा, ये घोड़ा यहां जाएगा, कहां कहां जाएगा मेरे दोस्त, सबकी नाक में दम करेगा। एंड e6 खेलोगे तो पूरा ही अंदर घुस जाएगा भाई। डर के रहना पड़ेगा हमें गारू को। मैंने सो गुड उस पर सट्टा लगाया था। भाई भाई नो, गैमलिंग इज नॉट गुड भाई। बाय द वे 5.5 मिनट दोनों प्लेयर्स के पास नेक टू नेक चल रहे हैं। व्हाट इफ मैग्नस जॉइंस फिडे वर्ल्ड कप? आई थिंक दैट ज्वाइनिंग का डेट जा चुका है। आई डोंट थिंक दे कैन ज्वाइन नाउ। एंड मैग्नस ने कहा भी, उसको क्लासिकल चेस में इतना मजा आता नहीं है। एंड ही वन द वर्ल्ड कप लास्ट ईयर। तो एक बार होता है ना, अचीवमेंट अनलॉक्ड। Once you have unlocked the level to a video game, you want to play the next level, not the same one. Are you guys coming from day one as well? Yes. Me, Sahaj, Rakesh, uh, we'll be there for the Chesscom team. Tanya will be there. You'll also have Awadh and Sahil Mishra, हमारी कंट्री डायरेक्टर, हमारे एडिटर, दोनों वहां पे होंगे। सो बहुत सारे लोग होंगे हमारी टीम के। और चेस इंडिया से भी होंगे, सागर भाई होंगे, अमिता विल बी देयर, हर्षित विल बी देयर, दैट टीम विल बी देयर, लॉट ऑफ लव गाइस, कार्तिक एंड हिमांक एंड सो ऑन। सो बहुत सारे लोग आएंगे वहां पे। अरे B6, nice move defending that pawn. I mean, obvious move. और क्या ही चलोगे? But how does now Gukesh put on more pressure? Maybe knight D5 is one move, like putting pressure on the pawn, and उसके बाद E6 तो lit up, played. Nice, nice, nice move. And now I'm thinking G3. Oh, I was thinking G3 to prevent H4. Like मेरा एक ही worry है, वो है ये. This can be a pain, like for Gukesh sometimes. So I thought G3 might be okay, but okay, B3 also has a nice point. My rook gets in the game very quickly. So also a good idea. Foreign commentators, I don't have an idea of foreign commentators actually, because एक Indian broadcast होगा, foreign का फिर एक अलग होगा. So you will have some commentators. I don't know who they are right now. I did see कि Katie is in India. I saw on Instagram, so maybe she is one of them, but I'm not aware about the foreign commentators. We'll get to know in a couple of days. Yeah. Sagar Shah not doing watch party. Watch party, किसकी watch party? Which is the peak versus Magnus peak? Maybe Magnus peak slightly, हल्का सा ही, but Magnus peak. Okay, by the way, Hikaru again falling in time pressure. Good signs for Gukesh. And I think the problem is the king. Where does the king go? अगर king problem solve हो जाए Hikaru की, I think he's doing okay. But king, उसका knight बहुत strong है D4 पे. And bishop also has a lot of potential in the position, right? So it's not a bad piece. It's all about the king now. The white king is better placed than the black king. And your rooks disconnected hai. Rooks are very well placed when they are connected, supporting each other. ड्रॉ मुश्किल है एक्चुअली, बहुत इम्बैलेंसेस है। इम्बैलेंसेस का मतलब क्या होता है, चैट में पता है क्या? इम्बैलेंसेस मतलब कि हर एक डिफरेंट साइड्स के पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स है पोजीशन में। सो इसका मतलब गलती करने के चांसेस बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल बिशप 5 ऑलरेडी अ स्लाइट मिस्टेक एंड बेटर, बट विल ही फाइंड नाइट C3 इज द क्वेश्चन, राइट? Ooh, that's a mistake. Wait, why would you play knight G3? Oh, mistake by Hikaru as well. Wow, did we disconnect by the way? Sorry, bhai. I think we are back now. Huh. We are back. And by the way, knight is slight mistake by Gukesh, but E6 mistake by Hikaru. Time pressure आते जा रहा है, गलती हो जाए. Knight can now come to F6. Let's give that check. Gukesh, put the knight on the F6 square. Beautiful square. King को attack. And maybe there's some initiative possible. क्योंकि अगर आप A file खोलते हो, मेरा रुक घुसेगा A7 पे, and the black king is getting assaulted right now. Gukesh Damaraju is not just a chess player, chat. He's an inspiration for the future youngsters. He's an inspiration for every single player
on the globe right now that you can become a world champion at the age of 18. You can break rules, you can create history in real time nowadays. It is possible. Whatever dreams you have, it is possible. कोई ना कोई बंदा वहां पे किसी एआई ऐप पे काम कर रहा है, कह रहा है गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, तो मैं कोई अपना कंपनी क्यों नहीं स्टार्ट कर सकता? ही इज एन इंस्पिरेशन एंड ही कैन really press home that point again if he beats Hikaru Nakamura. Okay, Magnus is too strong, but can we defeat the world number 2? Can we be best among the rest? Now, knight h5 pawn maar liya hai, position looking great. Black ka knight bhi acha hai though, so let's see how you tackle this. Time pe aage, that's a very important detail. 1K likes, इसका मतलब जानते हो चैट? 1K likes का मतलब कौन बताएगा? कौन बताएगा? By the knight d4 played. So, and it's now about creating a pass pawn. We are in the end game. King checkmate तो होगा नहीं. हमें pass pawn create करना है. And we have to find a way to push these pawns as quickly and as far up the board as possible. So g4 is automatic. Ooh, another mistake by Hikaru and Rook HD1. Suddenly Gukesh G is plus 1.3 now. He's close to that victory. Can he get that win and potentially get the second spot? Come on, Gukesh. Come on. And Carlsen Caruana को हरा रहा है. So that is looking great. Second place के chances अच्छे लग रहे हैं. Ooh, nice move played. H7 pawn. मारो मारो मारो, come on, take that pawn Gukesh. That's a free pawn. Grab that pawn. उसके बाद H pawn pass pawn हो जाएगा. That's what we were discussing right now. We need a pass pawn. We get that pass pawn. Boom! मार दिया भाई प्यादा. Gukesh Damaraju now completely winning. Okay, it's still not completely winning. Let me reframe that. He's objectively winning. Like with perfect play, he's winning. But black will create some chances. Hikaru is tricky. Okay, rook pe attack. Rook ko hilna padega hame. Rook b1 is the logical move. Play it quickly, Gukesh. Put that pressure back on Hikaru Nakamura on the clock. Let's go. Dr. Strange Timestone versus Magnus. Tough one, bhai. Tough one. Oof. This is the moment. Jahan pe Gukesh could get his first win in 2 days, by the way. He did not win a single game yesterday. Hasn't won a game yet. This is the win he needs to possibly gain some momentum. Hikaru, by the way, creating counterplay. Unka idea, knight b4, knight a2, knight b4, and queens. So Gukesh has to be careful now. Gukesh can play knight f6, knight e4, knight d6 instead. Let's go. Let's go. देखो भाई, इंडिया में सब न्यू किड्स यूट्यूबर क्यों बनना चाहते हैं? डिपेंड्स क्यों. आई वांट टू बी वन बिकॉज आई लव चेस एंड आई वांट टू मेक इट पॉपुलर. एवरीबडी हैज देयर रीजन. गॉड नोज व्हाई. एवरीबडी हैज अ डिफरेंट रीजन. मैं प्रिडिक्ट तो नहीं करूंगा. बाय द वे 2.5 मिनट दोनों के पास अब. लुकिंग टफ, लुकिंग टफ. मेरा फोन तक गिर गया भाई फ्रॉम द एक्साइटमेंट. हु इज गोना विन दिस गेम? चार बाय द वे 1K लाइक्स हो चुके हैं. क्या हो चुके हैं 1K लाइक्स? लेट मी चेक. हो नहीं, 900 लाइक है भाई. अभी पेंडिंग है 50-60 लाइक. कौन 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 गुकेश, फास्ट 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 फास्ट. भाई नाइट f6 लाओ ना. नाइट को गेम में लाओ. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाइट f6, नाइट b4. व्हाट इज द प्लान? Rook d8, Rook d8. Ooh, you have to apparently play h4, and the idea is knight a2 play. I can just play Rook a1 and win the pawn. Okay, it's not that difficult to see for a world champion. Played by Gukesh. Well done. Knight b4 on the board. Only move now. Rook d8. That's the only move on the board for the world champion. He has to take the rook that d8. Otherwise, Hikaru Nakamura is back in the game. Grab that rook. Grab that rook. Come on, Gukesh. Grab that rook. Take it, भाई. मार दो. 1 minute. It's not easy, but it's neither difficult to find. He is thinking he should be able to find it as the only move.
Because rook a1 directly, black can just distract your rook and take the a2 pawn, and black is even better there, I think. Because even though black pawn down hai, unka pawn further advanced hai. He can queen first. Your h pawn is far away. Rook d Gukesh, come on. You can do this. By 45 seconds, take that rook, Gukesh. London incoming keh rahe Taran. Nahi bhai, he has to grab it. 30 seconds now. Not easy, not easy. 19, 18, 17, 15 seconds for the world champion. He has to grab that rook or it's a draw. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. That's not the move he should have played. I think Gukesh couldn't calculate all the intricacies of the position in the 2 minutes he used. Actually, he used less than that. But regardless, this is a blunder. And now the position is equal. But Hikaru also has the only move. But rook takes d1. He will be able to find it, I feel. His move is much simpler. बस मार के A2 pawn मारना है. And Hikaru could also win this, by the way, now. This is not completely out of the blue because rook takes d1, rook takes d1, knight takes a2, h5, knight b4, h6. Yeah, it's anybody's game. By the way, he has taken on d1. Hikaru playing the best moves. h5 played. I don't think knight c3 is the only move. He has multiple moves here. Bhavishwan is saying blunder incoming. Chat stream like karo. Let's get more people. और दुआएं चाहिए. रुके one only move for Gukesh to draw the game or he loses. Tough. Yeah, that is tough. I think he completely missed a2 ke baad h7 pe there is simply king g7 and there's nothing to do. It's lost. A2 is now winning for Hikaru Nakamura. And yeah, I think that is the end of the game. Chess is brutal. Yep, Vivek bhai, bilkul sahi bola aapne. Hikaru plays it. Yep, it's a cold shower for the world champion and there is no draw because king h8 I have and it's just completely lost. You can't even stop the queen. Like there's no way you can stop the queen. King h8, rook f7. लग रहा है mate हो रही है, but there is knight e4 check. Knight takes and now queens and it's over. Yeah, knight e4 check, brilliancy, and it is over. Queen on the board for Hikaru Nakamura. Gukesh tries again. And now rook a2 check is the best move for Hikaru. Queen b1 is also another, just controlling h7. I think that's the move he might play. Anything else in Gukesh's back, but I think these are two very natural moves. Hikaru will find one of them. Yeah, he finds the best one. Queen e1 check only move. Oh भाई मेरे को एक सेकंड के लिए उम्मीद आ गई थी यार. एक सेकंड के लिए उम्मीद आ गई थी, but not really. Yeah, rook g2 check. Yeah, it's lost. Gukesh to head back to Ranji Trophy to prove his place. यार
Hikaru 20 seconds. Yeah, king h5 only move. Now queen e2 only move for Hikaru. He has to find that move because Gukesh plan here and it's here mate. That's Gukesh's plan. So queen e2 only move for Hikaru. Finds it. King g6 of course only move for Gukesh. I think Hikaru is still a bit nervous here, I think. Now queen e4 check only move. F5 rook g5. Oh, yeah. Yeah. Simple move for Hikaru now. And queen e5 does the job. Yeah, it's over. Gukesh will resign. And that's the end of the game. What just happened? I don't know. Very hard to understand what just happened. And I think Gukesh is blundered. There was some calculation mistake. I think Magnus also winning. So Magnus will go to 23.5 points. Oh my God. By the way, Queen G3 only move, but he finds it very easy for a player like Hikaru. Yeah. Queen E4, check, and you lose the rook. Yeah, that's it. So Gukesh loses, goes from winning to losing. I think he was winning at one point, missed that move, and now Hikaru wins. So iska matlab Gukesh is going to be in the last standing, the only player to not reach double digits right now. And Magnus Fabi में चलते हैं. अभी Magnus हिकारू से खेलेंगे and Gukesh खेलेंगे कारुआना के साथ. Yeah, I mean it's hard luck. We still have to support our players. इसमें कोई doubt ही नहीं है. अच्छे टाइम में तो हर कोई सपोर्ट करता है. टफ टाइम में सपोर्ट करने वाले असली हीरो होते हैं. But I think Gukesh also has to work on his rapid and blitz. वो भी बात सही है. That's also true. By the way, Bishop D4, Magnus को सिर्फ G pawn push करना है. Yeah, pushes that pawn. He will win. And now I think actually Gukesh can still finish second. No, can he? No, he can't, right? Even if he gets 6 points, yeah, now you can't finish second. So Gukesh can at best finish third if he defeats Fabi twice. Wow, that's tough. Most likely he's going to finish in fourth place now. 1K likes giveaway करना है भाई, करेंगे यार. मूड ही थोड़ा सा अभी करते हैं. Where shall we come back for guarantee? Okay, let's hope so. Let's hope World Cup आ रहा है. He will come back in the World Cup for sure. Classical chess है. That's his forte. By the way, this is queening, so no way to stop it, I think. ठीक है, it happens, Chad. I think it happens. Never होता है. I think he is playing some tough competition here. And he's learning. He's only 19 years old. Let's not forget that. Seeing Magnus's form, we have ended up at 12 points for sure. Yeah, Magnus likely to win both. Maybe he will give one draw there. I mean, Hikaru could definitely win, but Magnus is favorite. So Gukesh को दोनों गेम जीतने पड़ेंगे to finish third, I think. Yeah, Gukesh must not be feeling well. There's no doubt about it. By the way, ये completely lost है because yeah, a couple of checks, king f5 at the right moment should be resigns. Wait, bishop कहाँ? Bishop b7 खेल सकते हैं. I think खेल सकते हैं actually. And then king f5 I was thinking. That should be winning. Okay, bishop bishop h1, nice. बिल्कुल कोने कोई चेक नहीं आएगी बिशप को. Nice move. Okay. Eight queens is possible now, but it doesn't work because I have rook a1 check. Knight b5. I mean, king e6. Yeah, as usual, just continue. Okay, give a check and continue. Nothing changes. कौन सी country में हो रहा है? ये US में हो रहा है. So it's on the other side of the globe. Knight b5. Just continue. Yeah. Oh wait. Rook a5. King b5.
किंग D7 पे नाइट B6 चेक. ओके, स्टिल 18 years should not be excused. He's world champ. Such blunders show that it was. I disagree. First of all, that's the classical world championship. This is rapid, and rapid never has been as strong for Gukesh as classical has been. So that point is not valid. Second, he's gotten better at classical rapid as well. उसमें हमने बहुत signs देखे हैं. Father Magnus has won, so he goes to 23. अलग ही लीग में है मैग्नस भाई. इट्स लाइक क्रेजी है मैग्नस भाई. 23.5. वाओ. वाओ. Have to admire this guy, man. You have to admire this guy. By the way, अगला गेम है फैबी वर्सेस गुकेश. सो अगर थर्ड आना है तो ही हैज टू बीट फैबी नाउ एंड अज्यूम कि कार्लसन बीट हिकारू. तो गिव अवे चैलेंज करेंगे. सो लेट्स डू अ गिव अवे चैलेंज चैट. आर यू रेडी? पहले रेडी सब लोग चैट में लिख दो, फिर करते हैं गिव अवे चैलेंज. आई थिंक टोटली डिजर्व्ड. ओके, सो चैलेंज ये है. अब मैं दोनों चैट भी पढ़ रहा हूं. आई एम रीडिंग बोथ चैट्स नाउ. Chess24 इंडिया, Chesscom इंडिया. सो आपको ये बहाना भी नहीं है. देखते कौन पहले लिखता है. कार्लसन वन द, या कार्लसन है या he's won the event भाई. वो अभी रिटायर हो सकता है. he's won the tournament with around 2 rounds to spare, so he's completely dominating. फैबी अगर दोनों गेम भी जीत जाएगा ना अगेंस्ट मुकेश, he will go to 20 and a half and he still might be 9 points behind मैक. क्रेजी है भाई मैग्नस. हाँ, so ground rules. To win the challenge, you have to write the answer followed by your Chesscom username, and only I have access to the backend, so only I can see the correct order. आपको different order में दिख सकता है, but that is not the correct order. That is the order you see, because आपको पहले टाइप करोगे सर्वर पहुंचने में कुछ मिली सेकंड लगते हैं. उसमें कोई और का किसी और का मैसेज आगे जा सकता है. ध्यान रखना. If you were a top player, imagine how helpless you would feel. Of course, I would feel helpless. It's very hard. I think you have to be incredibly motivated throughout the entire game, and through your entire life actually, to reach that level and possibly beat him. एक गलती आप नहीं कर सकते. खाली यूजर नेम नहीं भाई. आंसर एंड देन यूजर नेम. ठीक है, क्वेश्चन आने वाला है इन द नेक्स्ट 30 seconds. चैट. तो सवाल है, हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है एज यू ऑलरेडी नो. ठीक है, एंड काफी स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट भी है. गुकेश अर्जुन प्रग भी खेल रहे हैं. आपको बताना है कि जो वेन्यू है, जो होटल वेन्यू है, उसका नाम क्या है. द नेम फॉलोड बाय द यूजर नेम. द फर्स्ट पर्सन टू आंसर विंस. चलो भाई, आई एम फॉलोइंग बोथ चैट्स भाई. रिजॉर्ट नहीं है भाई. कौन सा रिजॉर्ट? या आई फाउंड द आंसर. आई फाउंड द फर्स्ट आंसर. इट इज, yeah, I can see it. The first answer is तन्मय आहूजा टू. ओ लेकिन आईडी नहीं लिखा. उन्होंने आईडी नहीं लिखा. उससे पहले पीयूष अग्रवाल 1. Okay, you have answered it first and you also have the ID. Piyush Agarwal 1, you win the diamond membership for 1 month. Congrats भाई. आपको मिलती है diamond membership. Correctly answered. So ये होगा. वाओ, यूजर नेम गलत है आपका भाई. योर यूजर नेम इज इनकरेक्ट. पीयूष भाई, क्या चल रहा है? व्हाट्स द सीन? इस नाम का तो कोई है ही नहीं. आईडी है ही नहीं, तो आईडी गलत है. नाउ व्हाट डू वी डू? वी गो टू द नेक्स्ट पर्सन. कौन है नेक्स्ट पर्सन? रियो गोवा. रियो गोवा, दैट इज एक्चुअली करेक्ट. सो नेक्स्ट बंदे का देखते हैं. वाह, मेरी बैटरी चली गई भाई.
हाँ ये बंदे को मिलेगी, यस, ही इज द नेक्स्ट गाय। सो इनको मिलती है 1 महीने की डायमंड मेंबरशिप भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपकी ऐड हो चुकी है भाई। उपेंद्र भट्ट भाई, यू हैव गिव यू रिसीव द मेंबरशिप। आई एम गोना नाउ चेंज द बैटरीज मीनवाइल। तब तक के लिए इंतजार करते हैं गेम के चालू होने का। फाइनल 2 गेम्स, फाइनल ओपोनेंट। रिजॉर्ट रियो नहीं, रियो है। अरे भाई रियो हो या रिजॉर्ट रियो हो, पीयूष अग्रवाल है। पहले आपने गलत लिखा था भाई, गलती आपकी है भाई, गलती स्पेलिंग मिस्टेक। भाई अगर बोर्ड के एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो नंबर तो कटेंगे ना भाई, तो रियल लाइफ में क्यों नहीं। मेरा कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा भाई? कैमरा को क्या हो गया भाई, ऑन हो जा। हाँ हो गया, हो गया, थैंक गॉड। भाई कैमरा धोखा नहीं दे सकते यार तुम मुझे। ह्यूज फंबल लमाओ, एब्सोल्युटली भाई, द बिगेस्ट फंबल। अबे ये क्या हो गया, फिर से बंद हो गया यार। मेरा कैमरा थोड़ा शाय हो रहा है यार फॉर सम रीजन। चैट तुम इतने मतलब क्रेजी हो गया, कैमरा मेरा शाय हो रहा है तुम्हारे सामने। वेट 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 वेट। मैग्नस शुड जॉइन वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, अच्छा मैंने कहा वर्ल्ड क्लास क्या होता है भाई। यार मैग्नस नो, यार उसने 5 बार जीत ली भाई। कोई चीज इफ यू आर चूजिंग अ हॉलिडे डेस्टिनेशन, वुड यू चूज वन जहां पे आप 5 बार जा चुके हो? नहीं ना, यू वुड नॉट चूज दैट। सो सेम चीज है भाई। मैग्नस वांट समथिंग न्यू इन हिज लाइफ। लाइक it's not exciting anymore for Magnus, I think. Thank you Priyan भाई। बस कैमरा ऑन हो जाए भाई। माइनस ने क्या स्मर्क दिया भाई उसमें फोटो में, आहा। ऑन ही नहीं हो रहा यार, क्या टाइम पास चल रहा है भाई मेरे कैमरा का। भाई थोड़ा अभी कड़की चल रही है कैमरा जी, अभी खराब नहीं होना। 17 times, yeah, actually even more I think, 17 है कि ज्यादा, I think it's even more if I'm not mistaken. I think it's more, it's like 21, I might be wrong though. हाँ चल गया कैमरा भाई, शर्मा रहा था यार। उस सागर भाई की प्रिटी गर्ल होगी शायद चैट में, तभी शर्मा रहा था। रुको, ओके स्विचिंग इट ऑन। हाँ वी आर बैक, वी आर बैक चैट, एब्सोल्युटली बैक। बॉक्स बॉक्स, अरे देखो, अरे भाई कैमरा सीधा ही नहीं बैठ रहा यार, नाटक कर रहा है मेरे सामने। हाँ अब बढ़िया है। ऑसम। साहिल, ये क्या है भाई, ये वाला चैनल आप चलाते हो क्या भाई? ये चेसकॉम का चैनल है, chess.com का चैनल है ये, एंड आई एम द कंटेंट लीड इंडिया फॉर देम। सो हम डेफिनेटली स्ट्रीम करते हैं यहाँ पे। चलाते हैं मतलब क्या होता है मुझे समझ नहीं आया। 18 times वर्ल्ड चेस, 4 times SCC, क्रेजी। If Magnus joined World Chess Championship, can anybody win? No chance. Magnus, though, I don't know if he'll win the candidates. I think that's a tough one. He likely will, but candidates जितना कई बार थोड़ा difficult हो जाता है even for Magnus. But if he's fully prepared, he will win. How seriously he would take the candidates उस पर depend करता है। मैग्नस डरता है क्लासिकल में हार जाएगा, नहीं भाई, ट्रस्ट मी दैट्स लीस्ट ऑफ हिज वरीज। It just takes too much effort to play classical। पहले पूरी रात तैयारी करो, सेकंड हायर करो, फिर 6-6 घंटे ही गेम खेलो। भाई रोनाल्डो अगर 6 घंटा फुटबॉल खेलना पड़ता वो भी रिटायर हो गया तब तक यार। भाई कब स्टार्ट होगा? आई थिंक होने वाला होगा इन द नेक्स्ट मिनट और टू। फाइनल 2 गेम्स। Magnus 18 by 18 incoming, bro. That is totally possible, actually. It will not even be shocking. Like, he does it on the last day. Last day, में he just wins everything. मैं उसको डायरेक्ट ट्रॉफी, हाँ ओपनिंग सेरेमनी में ही ट्रॉफी दे देनी चाहिए। बाकी लोग खेल लो सेकंड प्लेस के लिए, आई थिंक दैट इज फेयर। आई, अरे यार, हॉट एंड जी, थोड़ा शर्म करे भाई।
मैंने सही आईडी लिखा था, आपने गलत टाइप किया। नहीं भाई, उस नाम का कोई आईडी नहीं है। क्या भाई, कहाँ गए? नहीं नहीं भाई, इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ। मीनवाइल, और ये सब प्ले वर्ल्ड वर्ल्ड कप। नो, ही इज नॉट प्लेइंग द वर्ल्ड कप यार, ही इज नॉट प्लेइंग द वर्ल्ड कप। यार मैं कैमरा इतना मिस कर रहा हूँ ना। नेक्स्ट वे होगा 2K लाइक्स पे, वहां तक तुम पहुंच नहीं पाओगे मुझे लगता है, वेरी अनलाइकली। Intuitive missing, bhai, that's the issue. I'm sure intuition is a big factor. I think also it might just be the Carlsen effect, as we often see. Um, in fact, मुझे याद है जब साहा जो मैं कमेंट्री कर रहे थे during Grand Swiss, sorry, Grand Chess Tour, I think I mentioned it कि Gukesh took a draw in the third game against Carlsen after defeating him once and losing to him once. That draw psychologically told Magnus कि Gukesh is a bit scared. Like, not scared exactly, but he knows कि he's the underdog. I think Magnus subconsciously understood and placed Gukesh in the, like, everybody else in the world category. And I think वो maybe was the wrong decision. That's what I believe. Maybe it's wrong, but yeah. Match has started really. नहीं भाई, मैं खोल के बैठा हूँ games. इमेजिन गुकेश बीटिंग मैग्नस भाई, उस दिन तो भाई जैसा किसी बंदे ने कहा ना चैट में, छुट्टी होगी भाई, नेशनल हॉलीडे। गुकेश भाई कम ऑन, यही तो हम कह रहे हैं। थैंक यू तन्ने भाई। Magnus has adversity, he doesn't have to play against that is true. He is the only one who doesn't play Carlsen. I mean, that's kind of unfair, I have to agree. अली से गुकेश नहीं होगा, अल जीरा नहीं है भाई, वो अली रेजा है। आई थिंक फिरूजा नेवर परफॉर्म्स वेल इन द कैंडिडेट्स। वो टूर्नामेंट उसका एक, बोलते हैं ना, एक ब्लाइंड स्पॉट सा रहता है, लाइक ही कभी अच्छा नहीं खेल पाता, तो मुश्किल है। चल तो ना करो टिक्कू भाई। आई विश ब्रो, आई विश आई कुड डू मैजिक to help Gukesh win. But I think Gukesh even wouldn't want to win with the magic, right? When Suhani Shah को बुला रहे थे, I think he would like to win on his own skill. अभी checkers भाई, checkers is solved if you don't know. So एक ऐसी गेम जो solved है, उसमें कितना फन होगा आई डोंट नो। इफ चेस वाज सॉल्व्ड एंड यू न्यू कि 1 e4 खेलना है, फिर 1 knight f3 बिशप c4 टू विन द गेम बाय फोर्स, यू वुड नॉट एंजॉय इट एज मच, आई थिंक। चेकर्स की वो प्रॉब्लम है भाई। सर ना, अगर कार्लसन नाम का बोल बाला नहीं होता, इसका क्या मतलब है? बोल बाला क्या होता है? इज दैट मैजिक ऑफ सुहानी शाह रियल? भाई सुहानी ने मेरे साथ ट्रिक करी थी, बेसिक ट्रिक थी, बट बेसिकली उसने ऐसे कार्ड का डेक अपने हाथ में रखा, एंड देन शी आस्क्ड मी टू लाइक ब्रेक इट इन टू, लाइक काटने को बोला। मैंने उठाया, उसने 1 सेकंड में बोल दिया द नंबर ऑफ कार्ड्स जो आई थिंक उसके हाथ में मेरे हाथ में बचे। तो आई मीन शी इज ऑसम एट व्हाट शी डज, हाउ शी डज इट आई डोंट नो, बट शी इज अमेजिंग। लाइक मैंने उठाया, उसने बता दिया नंबर ऑफ कार्ड्स, इट्स क्रेजी। What about Chinese game Go harder than chess? Go is definitely harder, but I think it's not as popular across the world. Um, और कितना टाइम लगेगा? आई थिंक मे बी 2-3 मिनट्स में हो जाएगा चालू, आई एम गेसिंग। क्रिकेट फैन मैं लाइक हैकर इन द लॉबी। ब्रो जस्ट जस्ट थिंक, डे 1 पे हम क्या हाई पे एंड किए थे भाई, क्रेजी हाई था। और डे 3 पे सडनली फोर्थ प्लेस से निकलने के लिए फाइट कर रहे हैं भाई, ये होता है मैग्नस इफेक्ट। नहीं, 120 पे नहीं होगा, आई थिंक 115 पे होगा। आप कितने मैच में हरा दोगे? देखो, कार्लसन को हराने के लिए मुझे कम से कम एक पीस तो चाहिए, मे बी मोर। उसके बाद शायद मैं हरा पाऊंगा एक्स्ट्रा। तब भी कार्लसन का ये पीछे हटा दो, एंड
Bullet blitz now, like rapido at least. Then maybe there's a chance. वहां कोहली की रिटायरमेंट से नींद आ रही है या उनकी की फॉर्म से? यार नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते भाई। आई थिंक कोहली भाई भी खेलेंगे। आई थिंक वनडे तो खेलेंगे ना भाई, होपफुली। T20 तो खेलेंगे ही। मुकेश तो अभी 19 साल का है भाई, वो तो बहुत साल खेलना है उसने। बाद प्लेयर्स बोर्ड पे आ चुके हैं, सो गेम विल स्टार्ट एनी सेकेंड नाउ। उफ, कम ऑन यार, ये गेम तो जीत जाओ यार, मुकेश भाई जीतना ही पड़ेगा। जीत एंड C4 बाय कारुआना। लेट्स सी क्या होता है। ये ओपनिंग हमने कल भी देखी थी, तो बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या गुकेश कम बैक कर सकते हैं, या विल दिस जस्ट गो डाउन लाइक अ डाउनवर्ड स्पाइरल। हमें देखा था वो स्पाइरल इन दैट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, याद है? क्या वो फैबी बोर्ड पे नहीं है? अच्छा, मैग्नेस नहीं, ओके। D5 played, okay. D5, Queen D5, Knight F3 only move, Rook hanging यहाँ पे. Gukesh playing very quickly for now. So is Fabi. Okay, Bishop D2 at some point. Knight C3 also logical move, attacking the Queen. ये game Black से अगर जीत जाए, that's gonna turn the matters in his favor. अगर हार गए तो he's gonna finish in fourth place for sure. Queen play attack, Queen goes to D8. Bishop G2 castle करेंगे Fabi. So far so good for Fabi. I think White की position बढ़िया लग रही है so far. Come on, come on, come on. Okay, H6 preventing knight G5. So जब भी E4 आएगा, white cannot play knight G5. That's the plan of H6. Ooh, he doesn't stop it. Yeah, very interesting. E4 still possible, but I guess knight E1, yeah, also very logical. Okay, interesting. No crazy stuff happening so far. I'm checking a couple of things. कुछ हो रहा है क्या? कुछ crazy अगर हो रहा हो. Not really, not really, not really, not really. Not really. Okay, not really. So going back to the games, चैट पढ़ते क्या लग रहा है? टिक्कू कैन बीट मैग्नेस, हा 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 हा, कह रहे बिफोर यूपीएससी। भाई तुम्हारा नहीं होना यूपीएससी भाई, नो चांस। बाद में कैसल कर लिया यहाँ पे गुकेश ने D4। चैट सेंटर में पॉन व्हाइट ने अब तक एक भी नहीं रखा है। ही वांट्स टू प्ले D4, पुट दैट पॉन इन द सेंटर, आराम से सेंटर ब्रेक करो, एंड ही इज गोना डू दैट। टाइम पे 1 मिनट आगे है। गुड साइन, गुड साइन, गुड साइन। आपने स्लीप स्केड्यूल पे दो शब्द, 2 बजे, 2:30 बजे स्ट्रीम खत्म हो तो उसके बाद शब्द बचने के लिए ताकत होती नहीं है भाई। सो स्ट्रीम खत्म और बंदा विल स्लीप। डू यू थिंक मैग्नस विल विन अगेंस्ट स्टॉकफिश इन क्वीन ऑड्स? यू मीन मैग्नस हैज अ क्वीन मोर? ऑफ कोर्स। कम, लाइक आई वुड विन क्वीन ऑड्स में अगेंस्ट स्टॉकफिश। मैग्नस तो जीत ही जाएगा भाई। मैग्नस आई थिंक पीस अप भी जीत जाएगा स्टॉकफिश के अगेंस्ट। उसके आगे कुछ पता नहीं। ब्रो इट्स 1 o'clock या 1:15, एंड आई थिंक ये मैच खत्म हो जाएगा, आई थिंक 2 सवा 2 तक, आई एम गेसिंग। Bro, organize should start a GOAT Cup tournament for Maggie. So you mean everybody in the world plays and the winner plays Magnus? तब भी मैग्नस नहीं जीतना है भाई। What if Magnus started coaching Prague? I think that would be life changing for Prague or any player. अगर मैग्नस के इनर थॉट्स कोई भी प्लेयर प्राइवेटली समझ पाए, दैट इज लाइक अ चीट कोड फॉर चेस, आई फील। Okay, D4 played. Now I think some pressure already on गुकेश। ध्यान से देखो चैट, ठीक है? दोनों घोड़े गेम में चंगे। दोनों सारे बिशप ब्लैक वाइट के चंगे, बट ब्लैक का एक ही बिशप चंगा है। द बिशप ऑन C8 इज स्टक, इट्स नॉट डेवलप्ड। इसका मतलब कि ब्लैक इज बिहाइंड इन डेवलपमेंट, एंड व्हाइट का पॉन सेंटर में भी है, सो एक एक पॉन सेंटर में भी है। सो ब्लैक बेसिकली एक चाल पीछे है पूरा, एंड दैट्स व्हाई व्हाइट इज बेटर। एंड मारने के बाद व्हाइट का नाइट सेंटर में आएगा। सो अगेन नाइट बेटर देन नाइट, बिशप बेटर देन बिशप, एंड हेंस फैबी इज स्लाइटली बेटर। एंड तभी गुकेश बहुत डीप सोच में। Ooh, that's not a good move. D5 is very strong apparently.
ऑलरेडी हमारा एक कम पीछे रहा था, दूसरा भी पीछे जाएगा यार। D5 नाइट B8, दिस इज नॉट गुड। I don't like this at all because knight D2, E4, knight C4, rook C1, knight B5 looks very dangerous. Favi better already. क्या पी रहे हो? अरे भाई स्ट्रेस, स्ट्रेस पी रहा हूं भाई। यहाँ गुकी भाई नहीं जीत रहे, वहां वर्स्टैपन भाई चैंपियनशिप होने की कगार पे। नहीं भाई, वर्स्टैपन जीतेगा भाई, देख लेना तुम। If Carlsen get beat Frida 16 points lead in CC final, then beating others is no big deal. Yeah, this is not even like Magnus 100%. This is like 75% Magnus. ऐसे गोकू करता है ना फाइट, like he will not go full mode, full super saiyan god in the first fight. He will fight in his base form to enjoy the battle more. Yeah, so that's what Magnus does. He doesn't find his peak strength. Like he might be distracted, might be listening to music. Like कई बार देखा था हमने, yeah, speed chest था या क्या था, he was listening to some like comedy or whatever, and he won against Prague at one point. कल 85, 85 मान लो भाई, 80 मान लो भाई। By the way, Queen E7 के बाद Fabi is taking a lot of time. He could take on E5. Definitely एक बढ़िया चाल तो है ही, सब कुछ exchange हो जाएगा. But that's more equal to a draw. अगर Fabi को जीतना है तो I think D5 maybe is a better try. सारे प्लेयर्स सजे में, मैग्नस कार्लसन मजे में। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है। लेट्स गो। आई जस्ट रियलाइज आई कुड से एनीथिंग एंड मैं कह सकता, ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा कि वो दूसरी चैट से मैं पढ़ रहा हूं। बट द चैट विल नॉट रियलाइज कि मैंने वो चैट इन्वेंट करी, कि एक्चुअली वो चैट में किसी ने लिखा है। वाओ, देख रहे हो? देख रहे हो तुम चैट? क्रेजी। फैबी चल भाई। अबे क्या जल्दी है भाई, आराम से चले। मैं तो कह रहा हूँ 7-8 मिनट और दो उसको लेने के लिए। क्या जल्दी क्या है भाई, क्या मतलब, क्या इशू क्या है? Oh, he takes on E5. That's a mistake. I think, okay, knight B5 is a nice move though, but still at least that D5 move was strong. At least worst case scenario देखने को नहीं मिला हमें। अच्छा, नो तो सचिन जी दोनों चैट में लिख रहे हैं 40 IQ talks, nice. Maybe Gukesh is unwell. He was coughing also yesterday. यार मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कैमरा नहीं है so I didn't see that one, but that is a possibility. But I also think it's just Magnus being Magnus. Yeah, crushed. I mean, Magnus defeated him 5.5 half. So of course Gukesh will not be in first place, second place. That's just obvious. You can lose to Magnus, but it can't be 5.5 half. Come on, come on. अच्छा वो एक ही chat है क्या? Sorry, I was not looking at Chesscom India chat. Oh, now looking at Chesscom. Nice, nice, nice. Can Magnus beat me? Definitely. It's not Gukesh Domanaju. ये क्या है भाई? बाद बिशप 3 के बाद आई थिंक बिशप E5। आइडली हमें बिशप पेयर नहीं देना है। लेट्स प्ले बिशप E5, एक्सचेंज इट फॉर द बिशप, और इस नाइट को हम लात मार के भगा देंगे A6 C6 से। सो गुकेश इज इक्वल नाउ। आई थिंक फैबी ने प्रेशर पूरा नहीं डाला यहां पे। अपेरेंटली ई टेक्स F3 मारना था टू अलाउ रुक E1, बट आफ्टर बिशप F3 आई थिंक बिशप E5 and Gukesh is equal. That's a good sign. That's a good sign. Excellent sign. Okay, also a decent move. The okay, thanks for that, Bhai Proji. But the problem is, Bishop F6 आ गया. You can't take with the queen because C7 is hanging. अब pawn से मारना पड़ गया, तभी विषय बहुत इंपॉर्टेंट था यार। Now rook C1, rook C4, rook H4 feels deadly to me. Like ये maneuver बहुत strong लग रहा है. Rook somewhere on the fourth rank. I don't know where, but somewhere. Looks a bit scary, right? Queen D2 आ रहा है, Bishop E4 आ सकता है कल को. This is a bit scary. ओलंपियाड 2024 वाले मुकेश को वापस लाओ, अब मजाक नहीं रहा भाई। लेट्स होप सो यार, लेट्स होप सो आ जाए। अरे अरे, एक और सुपर चैट भाई प्रो जी, क्या हो गया भाई?
Thank you. The first time watching chess, welcome, Mangbai. If you're watching this for the first time, this is the king and this is the queen. दोनों का मिलाप हो नहीं पा रहा है, उसी के लिए फाइट कर रहे हैं. By the way, e3 played. Fabi doesn't find rook c1, rook c4. It's a good time to kick the knight back. Let's bring it to c3 ताकि वो रुक का पाथ भी क्लोज हो जाए हमेशा के लिए. भाई सहानुभूति दे दो, सागर भाई नहीं है तो आप ही संभाल लो हमें. ओके, सहान और भूति. सो मेरे ख्याल से चैट दिस टूर्नामेंट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट, राइट? आई मीन वर्ल्ड कप जीतना ज्यादा जरूरी है. तो ठीक है, रैपिड ब्लिट्स है, इतना उतना फर्क नहीं पड़ता है. हम खेलेंगे वर्ल्ड कप, वहां गुकेश धोएगा, फर्स्ट आएगा तो बढ़िया हो जाएगा भाई. डोंट वरी चैट, एवरीथिंग विल बी फाइन, ऑल इज वेल. बाय द वे, रुक d8, क्वीन c2 नाउ, मे बी decent move. Queen e2 maybe is not the best. I think I want to look towards the king, so queen c2 maybe feels nice. बोल तो कम वर्ल्ड कप में. अरे वाह, अरे द्विवेदी जी 20 रुपए बैठ. अरे वाह भाई, 100 रुपए आ गए भाई 1 मिनट के अंदर अंदर. चेसकॉम मतलब अब शायद कैमरा आ जाएंगे अब 100 रुपए में. थैंक यू भाई. अच्छा लग रहा है. वर्ल्ड कप जीते, नहीं जीते तो क्या होगा? वर्ल्ड कप नहीं जीते तो वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लेड्स, वी विल हैव 2 more world champions there. Don't worry chat. Other queen e2 played f5, so prevents e4 and knight e4 feels logical, but again the structure is too damaged. I feel like white is slightly better. I think हल्का सा better है भी. थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा केश को. Stop mentioning Gukesh's age as a consolation. I think age is always a factor. For example, there is, let's say there is Ashneer Grover ले लेते हैं भाई. अश अश अशनीर अशनीर ग्रोवर ही है ना भाई. हाँ, अशनीर ग्रोवर ले लो, ठीक है. ही इज लाइक अ बिजनेसमैन, 1,000 crore net worth, whatever. Now he's in his 40s या 50, I don't know exactly, 40s मान लो, ठीक है. Now if you're in your 20s, you can say कि भाई वो बंदा इतना आगे है मुझसे, 1,000 crore कमा लिए. Or you can say भाई he's had double the years I've had on earth. He's had more opportunities because of his age, so he has a higher chance of being where he is. So age is always a factor. भाई तारीफ ही तो कर रहा हूँ भाई, बेइज्जती थोड़ी कर रहा हूँ. By the way, queen c2 played, so keeping an eye on the pawn. uh, कल को बिशप यहाँ पे थोड़ा हैंकी पैंकी करेगा तो वी कैन ग्रैब इट. एंड आई थिंक rook d1 will be next. Oh, bishop d6 avoids the trade. I think he wants to put the bishop on g7 just to safeten up the king. I like that maneuver actually. I really love that maneuver. Bishop g7, suddenly मेरे king को थोड़ी सांस better आ रही है, right? Because it feels like it's a bit more covered. Suddenly both bishops looking great. By the way, भाई प्रो जी ने 100 रुपए की सुपर चैट दो भेजी है on the Chesscom India channel. Thank you for the super chat, brother. It is definitely a factor. We learn by experiences. Exactly. This is the best time for India after Vishy Anand's time. I think the best time was last year. And hopefully the next best time will also be next year. Okay, now where does the knight go? If knight f4, I will not be shocked that black usko instantly maar de. You can take with the G pawn actually. Rook G1 check incoming. Okay, multiple ideas possible still. Still not a draw. This year, I think, I mean, it can be if you win the World Cup. But पिछला साल जितना great था उतना बढ़िया तो नहीं हो पाएगा ना यार. Like candidates win, World Championship win, Olympiad win. Like it's not gonna be as crazy as last year for sure. Tal versus Magnus. Why Magnus wins every single time? Come on, come on, come on. King G2 played, just keeping it very, very solid. No commitment from Caruana.
आई थिंक ही इज वेटिंग फॉर द बिशप टू ड्रॉप ताकि वो नाइट F4 खेल पाए, एंड गुकेश कह रहा है भाई मुझे हिलाऊंगा ही नहीं, एंड A5 इज अ नाइस मूव, यू वांट टू प्ले A4, try to bring the rook into the game and create a weakness on A2. वर्ल्ड कप में मुकेश भी खेल रहा है, क्यों? आई थिंक इट्स अ स्ट्रॉन्ग इवेंट, अपने देश में ही है तो क्यों नहीं खेलेगा भाई? ताल विंस बाय लेवी, नहीं भाई, नो चांस, नो चांस, आई लव लेवी बट नहीं, मैग्नस विंस। ओके, 3 मिनट्स फॉर फारूआना, थोड़ा प्रेशर बनते हुए टाइम के ऊपर, मे बी दैट्स द होप गुकेश हैज नाउ। Knight C1, that's a nice move. Knight coming to D3 potentially to attack the bishop. अगर बिशप यहां जाएगा then knight F4. अगर बिशप यहां जाएगा then the king is again weak. So knight C1 is an excellent move by Caruana. Max will play world champion 2026. No, he's not going to play. He's mentioned multiple times. If you compare Magnus and 20 versus Gukesh at 20, who will you choose? You at 20, why? What were you doing at 20? टाल बॉट विंस वर्ल्ड कप और गुकी जो जीता उसमें क्या डिफरेंस है? वर्ल्ड कप इज बेसिकली, एक होती है वर्ल्ड चैंपियनशिप, दिस इज अ कॉमन कंफ्यूजन, वर्ल्ड चैंपियनशिप इज बिटवीन टू पीपल एंड इट डिसाइड्स द वर्ल्ड चैंपियन, लाइक वर्ल्ड चैंपियन टेक्निकली सपोज टू बी द बेस्ट प्लेयर बट एज वी नो दैट्स नॉट द केस, बट जो वर्ल्ड कप है इट्स अ नॉकआउट इवेंट बिटवीन द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स, लाइक 200 प्लेयर के आसपास, एंड the top three qualify into the candidates, which is a qualification tournament for a world championship. So यहां वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसके आई वुड से एक कदम नीचे आता है वर्ल्ड कप में भी, मे बी 2 कदम नीचे भी, बट इट्स ऑल्सो यूनिक इवेंट इन इटसेल्फ बिकॉज इट्स अ नॉकआउट इवेंट, सो मे बी इसका औदा काफी अच्छा है, इट्स नॉट रियली 2 कदम नीचे द वर्ल्ड चैंपियनशिप। मैग्नस वर्सेस टीचर, भाई टीचर है कौन मैग्नस का? काइंडनेस से स्ट्रीम फॉलो कर रहा हूं, मॉड तो बना देना चाहिए आपको भाई, मॉड बनने के लिए और तुम्हें पापड़ बेलने पड़ेंगे भाई। टिक्कू बी न्यूट्रल एंड टेल मी हु इज द प्लेयर ऑफ द ईयर, केमर भाई, so far I think Prag and Kamer are two contenders, Prag bhi actually, I think Prag and Kamer are two contenders for the player of the year so far, जो वर्ल्ड कप जीतेगा भाई he becomes the player of the year. By the way, king g7 played, I, okay, that's a risky move because now bishop के पास square नहीं है. Ooh, bishop chooses the d6 square. Okay, rook e1 maybe just developing a piece, improving the position, ताकि जब मैं नाइट F4 खेलूं अगर आप मारोगे, पॉन से मारने के बाद मेरा रुक आपकी क्वीन अटैक कर रहा होगा, and then I can also read out this bishop somehow to attack the F5 pawn at some point. Rook d2, okay, he's choosing to double up rooks, okay, black can also double up, हम भी कर सकते हैं भाई. I am IITN. कौन सा IIT भाई? Also depends. When is the next world championship? अगले साल 26 नवंबर में. Gukesh has played very well. I don't know if even Gukesh will agree with that. He played well on day one, but day two, day three was not good for sure. IIT Dolakpur. IIT, देखो भाई मुझे आपका नाम बहुत मस्त लगता है, अरे थैंक यू भाई, 4-5 जीरो और लगा दो। व्हाट्स योर रेटिंग भाई? 2200 फिडे। बाय द वे चल नहीं रहे हैं दोनों लोग ऐसे खेल रहे हैं जैसे मतलब क्लासिकल चल रहा हो, 2.5 मिनट है भाई दोनों के पास। भाई चलो यार, यू नो इवन आई वाज रिलैक्स, आई जस्ट लाइक 2.5 मिनट है भाई। भाई 2.5 मिनट में तो प्रेम भी नहीं होता है तो मूव्स कैसे होगी, कम ऑन। दीज प्लेयर्स आर रियली रिस्किंग इट अ लॉट टुडे, बहुत आराम आराम से खेल रहे हैं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। अरे था ना एक गाना, 2.5 अक्षर प्रेम की, कुछ मूवी थी ना भाई, इसलिए।
तू मेरा कॉन्वो का रिप्लाई क्यों नहीं करता? भाई बिकॉज तुम हेट फैलाते हो यार, हेट वालों को मैं 200 साल का बैन दे दूं, मेरा मैच चल जाए तो यार। पुट यूजर इन टाइम आउट 24 घंटे, बाय बाय बाय, एंजॉय। बाय बिशप बी4 प्लेड। अगर मारेंगे तो ऊ मिस्टेक, दैट्स अ मिस्टेक फ्रॉम कारुआना। आई थिंक नाउ द गेम इज अगेन इक्वल। रुक टेक्स, even just a takes b4, the game is now completely equal because a file खुल जाएगी and now the black rook is really active. That's a mistake from Caruana. Gukesh का gamble काम कर गया. Just play it quickly, Gukesh. Fast खेलो, fast खेलो, fast खेलो, fast खेलो. Nice move. And now, to be honest, अगर ये pawn यहाँ होता ना, I would even say Gukesh is better. I would even say क्योंकि ये दोनों pawn light square पे fix है. Any bishop end game, double B है pawns, but I think there are chances for the rook or the bishop to create some tactics here. Gukesh will again be in time pressure. Yeah, I think even Caruana will be. C5, okay, nice move. I think idea है C4 का, just to break open this bishop's diagonal. A2 पे pressure डालना है. Bishop F3 भी कुछ कर नहीं रहा है, by the way. It's putting pressure here, but ये pawn आराम से defended है queen से. Drunk Maggie versus Prime Tikku. Who will win? जो मैगी को ड्रंक कर रहा है भाई, वो बंदा असली कंटेंट तो उसको मिलेगा. What would you say is awaiting to qualify for chess national and international tournaments? Yeah, it depends on your age. Again, age is a factor. I think under 9 maybe you can be national champion at the rating of Atraso. But under 15 may you already have to be a strong grandmaster. So it depends on your age. क्या चल रहा है भाई? कोई चलने को रेडी नहीं है भाई. 1.5 मिनट है दोनों के पास. No, this is not classical. एक बंदा रियो रिजॉर्ट लिख रहा है अपना. भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर भी इतना इतना स्लो नहीं है भाई. ये तो अलग ही लेवल पे आ गया बंदा. हिकारू जीत गया रे, इतना दुख. हिकारू मैग्नेस से जीत गया, क्या बात कर रहे हो तुम? ड्रॉ हुआ भाई, उनका ड्रॉ हुआ. सो हिकारू ड्रू. बाय द वे, स्टिल फाइटिंग इट आउट Gukesh in the end game. Rook, if he trades queens, I think Gukesh is better. So I don't think he should trade queens. And now c5 is hanging. And if you play b6, the rook is hanging. So is it a repetition? Queen e7, queen b2, queen f6. Is that a draw? यार जीतने का चांस तो है, मगर मान नहीं रहा है फैबी. By the way, if Fabi draws this, he will go to 15 and a half. Hikaru is on 13. So Gukesh doesn't win this. There is no way he can finish third. He'll be guaranteed fourth. If he doesn't win this, he'll be guaranteed fourth actually. Wow. He has to win this at all cost. Wow. No option. Yeah, Peter Haney Nielsen, but Peter Haney Nielsen was also the second of Vichy, sir. So he's worked with both Carlsen and Vichy. 300 से 2000 रेटिंग कैसे जाना है भाई? पहले जरा 100 मीटर वॉक करना सीखो, बाद में माउंट एवरेस्ट क्लाइम करोगे. ये बहुत लंबा पूछ लिया आपने भाई. बाय द वे, मिस्टेक. C4 is giving slight chances to Gukesh. Come on Gukesh भाई, खेल दो यार, खेल दो खेल दो खेल दो. कुछ तो होगा यहाँ पे possible, but you have to sack the f5 pawn. That's difficult. Like C4 takes and takes, allowing this, and queen d2, and there is some crazy lines. Sorry, not this, like this. You pick up the bishop. Oh, tough, 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 tough. Also, rook a7 with the idea of b6, like just to kind of unpin this pawn. b5 or b6 खेलेंगे next is also possible. Jaldi, Gukesh, 18 seconds. Come on, come on, you have to play it now. Play it now, 15. You cannot risk it anymore. Blunder हो जाएगा वरना. Okay, चलो भाई. 11 seconds. He's feeling the pressure. He finds the best move.
Only move is b takes c4. If black manages to take on b3, the game will be over. Caruana has to grab that pawn, allowing the bishop to come to c4. But will Gukesh take with the bishop? Will he have the guts to sacrifice the f5 pawn and head off into that complicated middle game? Ooh, tough moments. 12 सेकंड फॉर करुआना बोथ प्लेयर्स इन टाइम प्रेशर कौन पहली गलती करेगा विल इट बी फैबी विल गुकेश गेट फर्स्ट विन इन 2 days 3 seconds for his opponent 2 and Fabi has blundered that's a golden opportunity Rook A7 wins CV3 wins winning for Gukesh now close to winning take that pawn just grab it. He's now close to winning. Queen d3, only move for white or he's lost. Only move queen d3. 4 सेकंड है निकाल दी. Rook a2, only move for Gukesh to put pressure. Neck to neck चल रहा है. He doesn't find it. Still some chances to win maybe with the pass pawn. It's a battle of nerves now. Rook b7 नहीं खेल सकते. That's so unlucky for Gukesh. He has to play b3. Allow Rook b4. 3 seconds now. Bishop d5 very close to a draw. Rook a5 maybe preventing. Oh, he tries Rook b1 instead. But now white can play Bishop d5 and Rook b7 as well. Tough match. Tough match. Even white could win this actually. You never know. You never know. Ye pawn will decide whether Gukesh will win, draw or lose. A loss? Lose. 4 सेकंड 3 सेकंड किंग f3 किंग आगे बढ़ता हुआ गुकेश अपने किंग को आगे बढ़ा सकते हैं अगर वो चाहे तो रुक d1 भी खेल सकते हैं बिशप अटैक करने के लिए बिशप d1 चेक भी पॉसिबल है बहुत सारी मूव्स ही प्लेज रुक d1 बिशप b3 देयर इज बिशप e4 चेक विद सम मेटिंग आइडियाज ही टेक्स इट चेक कम ऑन गुकेश चेक 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 एंड गेम में चले गए हैं आई थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल ड्रॉ It's basically bishop and 2 pawns for the rook, but that's the best Gukesh saw. But the game goes on. They will not agree to a draw. Gukesh will play for the win here. He's not risking anything. He cannot lose this. F4 check maybe for Caruana now. But king d4 then. Ooh, maybe f6. Just, yeah, nice move. Putting all the pawns on dark squares जहां पे bishop attack नहीं कर सकता. Fabi being a bit cautious. King d4, king e3. Let's go, Gukesh. Move the king in. Yes, he's ready. Game draw hai, but can he create some winning chances here? Definitely a possibility. Fabi गलती कर सकते हैं. 6 सेकंड है क्लॉक के ऊपर. पहली गलती. Let's go. Building up the pressure. Pressure is building up. Rook b5. Rook b5. Apparently he doesn't find it. Ooh, tricky. Apparently Rook f3 is the best move. What? That's insane. Rook f3. What? Doesn't find it. King g4 only move for white now. Only move is king g4. That is insane. I think he will find it. No, but f3 pawn hangs. He finds it. Wow. Fabiano Caruana. Crazy find here. क्या हम rook against bishop देखेंगे अभी? That is very likely. Rook versus bishop. Very likely. Check king h5. Rook versus bishop में गलती हो सकती है. Gukesh can win this. Rook versus bishop में गलती definitely हो सकती है. King e3 now maybe trying to grab the pawn. Getting the king back as soon as possible. Rook h4. Nice move. ये मारोगे तो ये मारूंगा. But okay, maybe it's a draw, yeah. Maybe it's a draw. Yeah, how do you grab the e4 pawn? You can't really. It's gonna be a draw. Yeah, it's likely a draw now. Yeah, it's a draw. And that means पहला ये गेम होता है draw. इसके साथ ही Gukesh has lost all chances to finish even in third place. He is going to finish in the last place now in fourth place. He can reach a maybe not. Wait, he cannot. Even with a win, he will go to 12 points, which will be 1 point less than Hikaru Nakamura. So it is a draw. Yeah, that was a close shave. Chances थे वहां पे I think for Gukesh.
Second game chalu hogi in the next 2 minutes. Hikaru versus Carlsen has started. Let's have a look at that game before we go to Gukesh's game. Unki pehli game draw hui thi. He was hyping the draw. No, that was definitely possible to lose. Like King G4 was the only move for Fabi in that position. Everything else was -4. He found that only move in time pressure. Now I think 95 maybe is the move for Magnus. Magnus under some pressure here. Itna आसान position nahi hai. Hikaru has created some attack here, I think. Because now Fabi and Hikaru are playing for second position and Hikaru would love to win this. देखो आपके टूथब्रश कितने दिन में खराब होता है, ये क्या सवाल है भाई? Weird question, but okay. Come on, come on, come on. भाई गुकेश, every win gets you some $1,000. गुकेश तो जीत ही नहीं रहा यार. If Carlsen still thinking, feeling that pressure, 1.5 मिनट पीछे है कारू से. Come on, come on, come on. Takes with the knight. Of course, finds the best move. Knight takes c5. Bishop b5 maroge. So there is queen b5 check, apparently winning the game. So let's be very careful. There are only two moves, bishop e5 or d5. Everything else is lost for Magnus. Ticket के पैसे में भाई गुकेश का of course ticket everything is sponsored by the tournament organizer. Like it's not he's paying from pocket. And I'm sure, like I'm assuming he went business class. Like world champion तो economy जाएगा नहीं भाई. I'm hoping. Takes with the pawn, nice move. I think more and more exchanges are happening. Bishop d7, queen d7, knight f6, gf6. Close to a draw. I think black will castle. Or rook d1, nice move, preventing black from castling. Hikaru trying for a win. I bet on Gukesh for the end of position. Yeah, bro, that's not possible, unfortunately. Now, second place yaste. Gukesh is going to pay more tax. Arey yaar. Other castles only move. बाकी उनकी गेम चालू होने वाली होगी गुकेश की. Will keep an eye on that one also. इकोनॉमी गया था अर्जुन, ऐसा हुआ था उधर न्यूज कुछ याद है मुझे, कुछ हुआ था उसके साथ. आई डोंट नो इकोनॉमी गया था कि नहीं. No, I don't think he was economy, but he did face some issues with luggage, I think, with a certain airline. Don't switch to Gukesh's game. Why? Of course, we have to, and the game starts. Final game of the tournament, by the way, which has been an interesting tournament, I think, overall. Like day one was like a dream, like not like a dream, but pretty good. But day two and day three were not, not ideal, at least. Gotham Chess versus you. I think Gotham Chess is stronger at online format by far. Classical, maybe I think we can put up a tough fight, but online, I think he is stronger. He's faster basically. बहुत ज़्यादा. I think उनकी bullet rating 2800 है, मेरी 2600 है, तो 200 पॉइंट का डिफरेंस है. ब्लिट्स में I think even slightly higher. 250 का I think. Gukesh is already a millionaire. I mean, he deserves to be world champion. millionaire होगा तो कौन होगा भाई? एक ही दिन खेलना चाहिए गुकेश को. नाइस नाइस. Okay, I think white ने यहाँ पे by the way गुकेश गेम चालू हो चुकी है. Let's go there. So d4, knight f6, knight f3, e6 and g3 खेला गुकेश ने Catalan की तरफ जाते हुए. b5 preventing c4 by the way. Kind of an anti-Catalan setup. Yeah, Gukesh, he needs a win. This is the last game. He wants a win under his belt. He's not won a game on day 2 and day 3. He needs that win right now. ये game तो जीतना पड़ेगा. White भी है, तो chances अच्छे हैं. Come on, a4 खेला, nice move. If you play a6, then of course I can take, open the a file.
आई एम कीपिंग टेंशन हियर, कीपिंग टेंशन हियर. बिशप कहां जाएगा, आई एम स्टिल नॉट श्योर. Maybe f4 is the right. Oh, it takes on b4, takes on b4. Now my knight can come to d2, and then c4 and e5 looks very strong actually. a5 also I really love, just preventing a5 from black. Okay, bishop g5 also a decent move. डे वन के बाद मीम चैनल्स को रील बनाने को नहीं मिला. अरे यार, दिल तोड़ देता भाई. करुणा शुड हैव हैड सम. करुणा, ये क्या है भाई? ओके, पोजीशन बढ़िया, चंगी पोजीशन. क्यों? ओपन सी फाइल, गुड स्क्वायर्स फॉर आवर नाइट्स. बिशप बहुत बढ़िया, ये बिशप भी बढ़िया. तो ये आइडियल स्टार्ट है फॉर गुकेश. बट ही हैड मल्टीपल आइडियल स्टार्ट्स. कैन ही कन्वर्ट वन गेम इज द क्वेश्चन. Gukesh is a tier below other three in rapid time control. I kind of disagree. Below Magnus, yes. Below Caruana Hikaru, I'm not sure. Um, I think he suffered. The difference between him and other two is that he suffered against Magnus. The other two did defeat Magnus a few times. Hikaru defeated Magnus once. Caruana defeated him twice. That's the basic difference. Karuna means compassion, kindness in English. Oh, nice. As a 95 played, if D, of course, bishop hanging here, you can't play D6. So D5 खेल सकते हो, but then you're blocking your own bishop. So nice move by Gukesh, 95. Okay, he takes and now maybe he'll play D6, yeah? Yeah, nice move. Yeah, kicks the knight back. Equalizing completely now. Draw के chances बढ़ते हुए. Bro will come back in World Cup. Let's hope so, bhai. Let's hope so. At least now Gukesh can play without any worries. Uh, I'm pretty sure he's still worried. Um, has not been the ideal event for him. I think day 2, day 3. Now he has played the strongest players of the world, so it's not easy. But yeah, he would have expected more number of points, I think. Learning from mistakes is very important. Agreed. Now 9.5 minutes, still a minute or so ahead. Hikaru drew, really? Oh, wow. So Hikaru Nakamura draws with a repetition, and that means he ensures basically. Achha, he's third place, yeah? He's third place. Oh, he's so rankings are final chat already, even without the Gukesh game now. So Carlsen is first, Caruana is second, Hikaru is third, and Gukesh is fourth. Confirmed. Standings to आगे भाई. Game आई ना हुई हो. Arjun and Prague definitely would compete better. It's hard to say actually. Even in Norway chess, मुझे याद है Gukesh did defeat Magnus once, but Arjun lost to Magnus. I think he defeated him in the second game in the tiebreak, but that was not as crazy, I think. So maybe yes, maybe no. It's very hard to know for sure. E3 solid. Maybe knight b6 now. The format is closer to blitz than rapid. Yep, we mentioned this before actually. I think ये ऐसा format है जहाँ पे 10+5 it's not normal rapid. Rapid at least 15+10 होता है usually. So this is more close to blitz, but it's still like more time than blitz. This is 3+2 by the way sometimes. Okay, takes. Now queen takes, of course, connecting the rooks. So Caruana has completely equalized now. No pressure whatsoever. So likely gonna be a draw. मुकेश अगर ड्रॉ करते हैं तो 10 पॉइंट पे जाएंगे. नॉट व्हाट ही एक्सपेक्टेड, बट एटलीस्ट डबल डबल डिजिट तो पहुंचेंगे हम लोग.
या मैं लिटरली वही बोला अभी। एक मैच जीतने थे फैबी 3K चाहिए। आई डोंट थिंक वो दिमाग में होगा मुकेश के कि भाई $3,000 चाहिए मुझे पर विन। Chad, most top players get like appearance fee apart from the prize money. So, and of course, all their expenses are covered. So usually जो prize money होता है, of course it matters, but इतना नहीं कि 1,000 $2,000, that's not making a huge difference for top players. That's a small amount for them. खर्चा निकलना चाहिए. Okay, still no moves. Rook C8, Rook C1 should be automatic. Here, एक ही open file है. Rooks belong there. वो हमारी मंथली सैलरी है कह रहे एरज जी। भाई वही डिफरेंस है ना वर्ल्ड चैंपियन और हम में। बाय द वे दैट्स अ नाइस मूव बाय कारुआना बिकॉज ही अटैकिंग द A4 pawn whenever he play rook c1 he threatens to take and take the pawn and if you play b3 there is knight c3 that would be horrific so knight तभी e4 खेला nice move by Gukesh yeah before you play b3 you have to kick the knight back nice move Magnus should you be allowed to play it's unfair lols now what though b3 maybe is logical. I think that makes a lot of sense to me. ताकि मारो तो मैं रुक से मार पाऊं. Come on, Ukesh, quickly, put pressure on the clock. ये तो मेरा भी रिजल्ट होता है इनके साथ हारना ही तो है भाई नहीं ऐसा नहीं है भाई. Oh, that's a mistake. Wait, what? Why did he play knight b3? Isn't rook takes c1 forcing like knight takes c1 now? Knight से थोड़ी मारना है हमने यार. Because रुक से मारोगे तो a4 pawn नहीं गया क्या? Okay, let's see what happens because rook c1, knight a4. Maybe there's rook a1 back, yeah? Yeah, maybe there is knight a5 actually. Takes and rook c8. Wow. Knight e8, knight. Okay, this is difficult to see. Okay, knight rook c1 played. So Caruana goes for it. We'll find out if this works or not. अब रुक से मारेंगे तो there is knight a4 to consider. There are other moves. डबल टिल्ट पहुंचे कि नहीं न्यू बेट. आई थिंक पहुंच जाएंगे. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक पहुंच जाएंगे. भाई साहब अलीजा नुदरबेग सिंदारोव अनीश मकसूदलू विंसेंट को इतना बड़ा चला के बताते हैं उनके अच्छे रिजल्ट्स हैं. मेरे को हमने वो सिर्फ गुकी कंपैरिजन करते हैं. भाई ओकेश वर्ल्ड चैंपियन है तो कंपैरिजन ज्यादा होगा. दैट्स ऑब्वियस. व्हेन डिंग वाज द वर्ल्ड चैंपियन तो बहुत कंपैरिजन होता था उनका कि डिंग इज नॉट इन ग्रेट फॉर्म एंड मैग्नस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. तो वो वर्ल्ड चैंपियन से कंपैरिजन होगा ही. ये जस्ट गिवन है. इट्स हाउ लाइफ इज. वी कांट डू मच. ओके. Okay, he takes with the rook now. Apparently, queen b7 is the best move, attacking the e4 pawn. And that covers the c8 square, and then you can take the pawn. Oh, that's not cool. That's not cool for Gukesh. हार ना जाए भाई. यार डबल डिजिट तो पहुंचना है यार. अभी लिटरली हिकारू गुकेश के लिए चीयर कर रहा है भाई. इमेजिन गुकेश चीयरिंग फॉर हिकारू राइट नाउ कि भाई जीतने मत देना फैबी को मैं थर्ड आ जाऊंगा. ओ क्वीन बी7 इज वेरी स्ट्रांग एक्चुअली. Because जो हम देख रहे थे knight a4, ooh, queen d7 also decent. But okay, e5 is a nice move by Gukesh. de5. Mm, queen check. Wait, d5, de5, queen check, queen f3, and maybe white is okay, yeah? Because yeah, if here, then Chad, what happens here? Why can't black just take the knight? Because rook to defend hai. What's the problem here, Chad? I mean, this looks nice, right? Free piece. Is it a free piece, chat? Yes or no? Come on, let's go. Udhar AG is getting smoked, really? Against Nepo. Back rank, exactly. Queen b3 is a blunder because queen a8.
Brilliant move, knight 8, rook c8, knight e8, and rook e8 is checkmate. So, yeah, there are some tactics still. e5 is a nice move by Gukesh. गुकेश शुड प्ले फरीदाबाद चेस। भाई मैंने भी खेलना छोड़ दिया है, वो गुकेश क्यों खेलेगा? के टाइम पे पीछे है फिर से कारुआना। आई थिंक आज के दिन में वी हैव सीन लेस टाइम प्रेशर इश्यूज फॉर गुकेश, बट तब भी विन नहीं आया, विच इज इवन मोर सरप्राइजिंग. If Pakistan was playing chess, I think chess would be big as cricket. I doubt it, but it would be bigger for sure. बट उसके लिए पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग प्लेयर होने चाहिए ना भाई. पाकिस्तान में टॉप प्लेयर्स 2200 हैं. उतनी तो रेटिंग मेरी है यार. ओ बाय द वे, नाइट c5 ओनली मूव फॉर ओकेश नाउ. This is getting tricky. And what's the difference between knight dc5 and knight bc5? That's also not clear to me. In fact, knight bc5 looks more natural because I can now play b3, which is not possible अगर मैं ये knight खेलूंगा तो. This is not easy. Oh, he finds the nice best move. Nice. Okay. He played fast, but he played worse moves. I think that's pretty accurate. Queen, I think, can go to e8 because queen c7 looks like a discover attack waiting to happen. Yeah, queen e8, nice move. And now I'm thinking h4, h5, h6 for Gukesh. ये g6 tempt करना है ताकि ये dark squares weak हो जाए सारे. Let's go h4, h5, h6, Gukesh. Come on. Come on, push that H pawn. Come on. Okay, he has time on the clock. Nothing to worry just yet. You can play better than Occasion Rapid, I believe. Thank you for bringing that vibe, but that's really unlikely. Come on, चल ही नहीं रहा यार. Yeah, the last game. I think day one cast जैसा चलता tournament यार. Day one की तरह नहीं गया unfortunately, but yeah, I think Mukesh tried his best. Come on, come on. टिक्कू भाई for World Cup. वर्ल्ड कप जाएंगे भाई, करेंगे कमेंट्री. वहां पे ज्यादा एक्साइटमेंट होगी. People don't realize Ukesh struggles against higher players, not low players. He just won double gold in a tournament. Yeah, and also the time control is a factor here. Like he doesn't have enough time to think. Um, and he's a player who calculates a lot, so he needs that time. That's also a big factor. Magnus didn't even have any ambition to play against Hikaru, so even if Gukesh had won both, he would still be fourth. Yeah, I think it would still have been fourth. By the way, that's a mistake from Gukesh. And apparently now knight a4 is just a pawn up for Fabiano Caruana. If Caruana wins, he will go to 17 points and Gukesh will be stuck on 9. मार देगा कारुआना. आई थिंक कारुआना हैज कॉन्फिडेंस नाउ. आप पहली गेम जीत जाओ ना, तो सेकंड गेम में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है. Oh, मार दिया. And 94 another. I think he's trying to create an attack. It looks very logical, but it's just not working right now because knight on d5 controls the f6 square. This attack is too little, too slow. Yeah, black के पास of simple plan है यार. a5 a4 create a4 a3 create the pass pawn, push it to the a1 square, and this is gonna be difficult, very difficult now.
Yeah, finds the best move, but it's not enough, I feel. Just knight d7, controlling f6 even further. Completely like removing any chances. आज के लिए इतना ही. Come on. Any tricks? How long does it take to become a GM? I am yet to see a player in the world who started in his 20s and became a GM. ऐसा ह्यूमन हिस्ट्री में मेरे ख्याल से या तो 0 बार हुआ है या सिंगल डिजिट बार हुआ है. That's how difficult that is. Okay, टाइम पे काफी आगे हैं, बट इज दैट तो प्रॉब्लम. कानून का प्लान बहुत सिंपल है. बस F6 को कंट्रोल करो ताकि नाइट F6 चेक ना आए, एंड साथ में ए पॉन क्वीन करो. सिंपल प्लान फॉर कारुआना. तो दैट्स द प्रॉब्लम. गुकेश का प्लान ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली. सो आई थिंक ही इज गोना लूज दिस वन. दैट्स द लाइकली रिजल्ट राइट नाउ एटलीस्ट. That means chess skill is God gift. Not really. I think many people have a God gift. It also has to be honed. And knight d7, best move played by Fabiano as well. He's not letting go. He's going to defeat Gukesh 2-0 and take revenge for what happened on day one. There's no idea now. E5 is hanging. It's over, I think. Magnus, who professor? Why? Okay, best move played. And now Queen F8, only move for Caruana. Because knight e6 आ रहा है apparently. So queen f8, knight e6 is the move. And then knight e5, it's freaky actually. Crazy variation. We'll come to it, will happen on the board soon. But queen f8 is the only move now, played by Caruana. Wow. भाई 20 का 19 तक कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Tikuba is also tired. Maybe. I think today was a tiring day. Also, I think जब results बहुत खराब जा रहे हो तो थोड़ा सा वो होता है. But yeah, I mean, we all want Gukesh to do well. I hope in the World Cup that happens now. Where do you belong from? I think my family is Kashmiri, but I used to live in Faridabad and now I live in Panvel. By the way, 345 for Gukesh, 145 for Caruana. If he can create complications, I think he still has a chance here. Complications chahiye lekin. You can't allow black to just push the pawn. Like kuch to crazy karna hai. Queen e4 maybe is the right move here. Defends the e5 pawn and doesn't simplify the game just yet. A4 played. Yeah, Caruana is not joking around. Okay, now how do you stop the pawn? If I have to spend time stopping the pawn, I can't attack you. And if I can't attack you, then black is just playing a one-way street. Simple है. कभी आओ इन ऑर्बिट. आएंगे भाई. आ चुका हूं मैं पहले एक्चुअली. मैं कल ही गया था वहां पे चश्मे टूटे तो आई वेंट देयर. क्या नाम है इसका? नेक्सस सीवूड्स मॉल है, वहां गया था मैं. तो वहां मुझे मिला कोई एक्चुअली. कोई बंदा था, कोई पेरिस से आया था घर अपने. तो I met somebody already there as well. Okay, A4 played. A3 happening next. Ooh, I mean, we don't even need Sahaj Bhai for this. This is extremely double-edged now. Like, आपने F pawn खोल दिया है, second rank weak हो गई. Either you win this now or you lose horribly. Like, there is no draw now. Draw गायब हो गया. Draw is gone. खत्म. It's over. Now it's going to be a win or a loss. Either Fabiano blunders and Gukesh wins, or
Caruana doesn't blunder and Caruana wins. Simple. Hai. He can just play a3 actually. That's the best move. Also, he can play knight f6. If you take here, then I take here. And if you take here, for example, there is simply a3. And this pawn acts as a shield for the king. By the way, g6 played mistake by Caruana. Some chances. Knight. Ooh, mistake by Gukesh as well. But okay, it's a practical move. You're trying to open up the black king. Fair enough. And now what though? Threat kya hai actually? I'm not even sure what threat is here. Threat maybe queen g4. Is it a threat? Doesn't seem like it. सब जल्दी बुला के पनवेल निकल जाते हैं. आप कहाँ जाते हो? मेरे पास ही आते हैं सब भाई. पार्टी तैयार मैं ही करता हूँ. By the way, takes he just played a3 calmly, ignored everything. And he's saying भाई तुम अपना करते रहो जो करना है तुम्हें यहाँ पे. मैं अपना क्वीन कर रहा हूँ भाई. Yeah, this is losing chat. I think he's going to lose this game. The queen does a fabulous job of defending the king side. It's over. Will Samay come to the World Cup? Maybe in the last few rounds if he's free. I do know कि नवंबर के फर्स्ट वीक में उसके शोज हैं, तो वहां तब तो नहीं आएगा. तो maybe I'm guessing maybe if he doesn't have any shows later, he might show up if Indians have a chance. But मुश्किल है यार. Goa is far away. Samay's time is very valuable यार. But आ भी सकता है. Knight f7. Why? But knight f7 may I can take with the king also, no? And then you have nothing. So if knight f7 here, this king takes. And तुम एक check तो दे दोगे मुझे d6 पे, but king g8 and now I'm winning again. Free का knight मिल गया मुझे. Come on, come on, come on. Okay, 1 minute, 20 seconds. So, okay, chat in the final 5 minutes of the game, maybe 3 minutes actually. Game is about to be over soon. Either way. Come on. Last trick. Some trick out of the hat. I don't know what that is. Gukesh is unable to find it yet. Assume this is 3 checks and we'll win. Nice. We also win King of the Hill actually. King of the Hill भी जीत जाएंगे हम लोग. क्या करना पड़ रहा है भाई? think why Magnus' son can become GM before Gotham Chess. Definitely a possibility, but I don't think Magnus' son will play chess, is my guess. Very unlikely. क्या सही है पर क्या he deserves this hate? नहीं भाई, of course not. I think he will lose on time now. Yeah, maybe not time, but he might just. Yeah, when the pawn comes to when. Oh wait, blunder. Bhai, Gukesh's trap worked. Now knight f7 is a brilliancy. He's back. Bhai, kya brilliancy खेली भाई. He's back bhai. रुको. Is it gonna be a draw? Bhai. Knight f7 takes queen d5. Okay, चमत्कार. Miracle. Bhai. Crazy. But okay, I think that was a nice trap by Gukesh. जो हम last track की बात कर रहे थे, वो इसने launch किया. And now it's equal, or Gukesh is better. Fabi has to find a1 queens or knight b6, or he's worse. He finds a1 queens. Okay. Now it's a draw. Knight g5 check. You pick up the queen, and I think this is a draw basically, Abhi. Yeah. Check. Wait, ये क्या हो गया भाई? हाँ. And queen d7. Yeah, it should be a draw. It should be a draw now. The game can go on. King F1 only move. What? Wow.
Okay, makes sense actually. King H1, yeah, makes sense, makes sense. ठीक है, draw होगा chat. Draw is at least better than loss, भाई. Take the point when you can. Oh, king कहाँ चला भाई ये? By the way, rook a to check and queen g8, only 2 moves. Okay, ये king कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है समझ नहीं आ रहा है मुझे. King f3 is lost, by the way. Queen a3 check wins for black. Be very careful, Gukesh. Where you go? King e2 back, I guess. चलो डबल डिट तो पहुंच जाएंगे भाई. Yeah, it's a draw. It's a draw. So that is a draw for Gukesh in the final game. I think he was lost, but he came up with a nice tactic there. I think that rook f1 move was nice. Fabi completely missed it, and knight f7, the same move you said, chat, was played, and now king f7 doesn't work because knight d6 check and the queen is lost. So yeah, Gukesh draws. इसके साथ ही टूर्नामेंट होता है खत्म 25.5 पॉइंट के साथ. Magnus Carlsen finishes in first place. 16.5 पॉइंट के साथ कारुआना is second, and 14 पॉइंट के साथ Hikaru Nakamura is third. So these are the standings. And Gukesh is fourth with 10 points. Not the ideal tournament. I think the difference between Gukesh and Karu and Hikaru, for example, is the score against Magnus. I think Magnus crushed Gukesh 5.5 in these 6 games. So something to work on for Gukesh there. Regardless, thank you, chat. Really want to thank you for joining us till this late for this event. Mazaya, day 1 was amazing. Day 2, day 3 was not ideal, but at least we got to see some exciting games. Gukesh fighting against the best in the world. Ab chat, Agla is the World Cup, a 26-day event, 27 including the opening ceremony. You have a chance to get the tickets right now. This is the link. Go and get the tickets. Book your spots at the World Cup and get a chance to experience it in the beautiful city of Goa. I'll see you there on 1st of November. I'll have Sagar Bhai, Tanya, Sahaj, Harshit, Amruta with me, maybe Rakesh Bhai as well. It's going to be amazing, and it's going to be the World Cup. 3 spots up for grabs at the candidates, and we're going to see you on 1st. So thank you, chat. Hard luck for Gukesh there, but he did kind of fight at the end. Nice tactic there. We'll see you on 1st. Take care and good night, chat. Bye-bye. Attention.